बस लाइव स्ट्रीम पे क्लिक कर दे, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो पहले इसको म्यूट कर देना। अब पहले ब्रीफ कर देते। I believe we are live. We are live on foundational channel. We are live on foundational. And we are also live on intermediate channel. वॉइस आ रही है क्या?
is not, zoom is perfectly fine. मैं ये कर लेता हूँ. वीडियो इज फाइन. एक कम और कर सकते हैं. Okay. OBS is also fine. Hello. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? OBS is also fine. सर नहीं आ रही है, मतलब आपकी आवाज़ आ पा रही है जब भी आप मुझे कॉल पे बोल रहे हैं. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? और देखता हूँ कोई और अगर तरीका पता चले तो. ठीक है, आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करता हूँ. ठीक है, थैंक यू.
हेलो, मैं क्लोज कर दूं? ये कैसे, या तो स्टॉप स्ट्रीम होगा या फिर सीधा मैं, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, आप एक बार आप चेक करो किशन सर, वहां पे अब अभी स्ट्रीम हो रहा है वहां पर इंटर के चैनल पर? अभी आवाज आ रही है वहां पर? अब मैंने स्ट्रीम किया, एक बार चेक करो। हो गया? चलो हो गया, बढ़िया, सब हो गया, सब क्लियर सर। ये अभी पैनलिस्ट करेंगे आधा घंटा और। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीट सारी खाली है सर, चलना हो तो बोलो, टाइम है। वही हम भी सोच रहे सर, टिकट करा के चलते हैं, बैठ जाते हैं निकेत सर के साथ ही। यार कल बुलाया तो चले भी चलते, बनाए भी नहीं सर, अभी भी बुलाया तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, देखो ऐसे इमोशनल बात नहीं करता। अरे सर, आप एक हेलीकॉप्टर नहीं करा सकते हम लोग के लिए? घर से तो बेटा निकलना पड़ेगा। क्या घर के उधर उतरवा दूं? वरुण भाई, आईसीआई की स्ट्रीम की आवाज कम नहीं कर सकता, मुझे मतलब ना मुझे आती है ना ही शांतन आपको आती। एक काम कर, मैं उसको मैसेज करता हूँ, आवाज किसी कम हो गया है? इसकी आवाज आवाज तो आ ही नहीं रही है, तो कम क्या होगी? अपने को नहीं आ रही, बच्चों को तो जा रही है ना। अच्छा, जा रही है क्या? तो यूट्यूब की वॉल्यूम कम कर दो, यूट्यूब की वॉल्यूम कम कर दो, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कम नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे। अरे वॉल्यूम वहां पर ऐसे होती है। मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर, एकदम सर, आ रही है मेरी आवाज? एकदम सर, मेरे को तो पहले से ही आ रही है आपकी आवाज। हमें आपकी आवाज, मेरे को तो हमेशा से आ रही है सर आपकी आवाज। नहीं सर, अटक गया तो कुछ। हाँ अब ये ग्रेट, स्ट्रीम इशू था, ठीक है। मेरे को तो हमेशा टाइम जी। किशन सर, जेडी सर, शान सर, राम राम, राम राम बेटा। चलिए,
क्या नवीन सर हमें देख सुन पा रहे हैं? नवीन सर देश एक इम्पोर्टेंट बात जानना चाहते हैं। एक्चुअली द हम भी नेशन वांट्स टू नो। क्या ये हम अपना सैटरडे छोड़ दें। लेकिन आप हो कहाँ अभी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा, बैठे कहाँ हो? ये और मैं हाँ, ये दुकान तो हमने देखी है, घर के बाहर ही है ना आपके, ये वोल्टास मैं भी इधर आया। अपन यहाँ पर रहते थे, उससे अपन निकले थे। वोल्टेज एंटरप्राइज। हाँ कैमरा यहाँ खुलता होता। ये देखो। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया। मैं अभी तक दूसरा होता है। रिच पीपल बहुत फैलाओ कारोबार इतना, आपको तो Rich- नहीं पता कितना। रिच पीपल प्रॉब्लम। ये नकुल सर गए कहाँ भाई, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। वो रुके जब तक नवीन सर का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो आएंगे नहीं। हाँ नवीन सर, साउंड नहीं आ रहा यार उस इवेंट का। वही तो दिक्कत है, किसी के में भी नहीं आ रहा, बच्चों को लेकिन सुनाई दे रहा है सर। नहीं सर, इंटर में साउंड नहीं आ रही मैंने फाउंडेशन। भाई चेन्नई छोड़ दिया। वरुण चेन्नई छोड़ दिया। चेन्नई मैंने ट्रांसफर करवा दिया। इवेंट एक्सचेंज में कर नहीं दिया आ रही। मैंने ट्रांसफर। देखो वो लग भी है फोन पे ट्रांसफर करवा दिया। हाँ, इवेंट पे नहीं आ रही क्या माउंट इंटर पर? नहीं, इवेंट की साउंड नहीं आ रही है। अब बाकी साउंड क्लियर है इंटर में। फाउंडेशन में सब आ रहा है, सब क्लियर है। ऐसे कैसे हो रहा है? आपके स्ट्रीम से कुछ दिक्कत हो रही है सारंग भाई स्क्रीन का सारंग भाई पता नहीं कहाँ से अप्पा लेके आ रहे हो तुम लोग। कोई बोलता है अपने टीचर के लिए सब। छी 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 छी। क्या करूं, मैं यूट्यूब बहुत खोलूं बहुत। क्या? आप यूट्यूब खोलोगे तो कैसे हो? वो भी तो बात है। एक काम करेगा सर, बताओ। मोबाइल में खोल दो और साउंड लगा दो स्पीकर पे। जुगाड़ है ये। कहाँ से इधर मतलब सोचते हो इको हो सर? जाएगा। इतना हैवी साउंड आएगा ना कि बच्चों का कान पड़ जाएगा इको होके। क्या करे, वो इंटर में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लाइंड स्क्रीन चल रहा है, चल रही है मूवी, बस कुछ नहीं है साउंड। सर एक काम कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पर करते हैं, 5:30 5:15 तक रिज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी आधा घंटा यही सब चलेगा। ये जो म्यूट हो टाइम म्यूट हो म्यूट हो। नहीं, हम आपको बोल ही नहीं रहे, हम फोन पे बोल ओहो समझ में आया था। ऐसे। अभी सर अब हमको क्या पता इससे। तो सर क्या करना है? इंटर में आपकी आवाज कैसी आ रही है? इंटर में तो आ रही है, म्यूट नहीं हो। हाँ सर, हम म्यूट पे हैं, क्या मजाक कर रहे हो आपने? कर रखा है म्यूट जबरदस्ती। इंटर चैनल में पूरा आवाज आ रहा है, इंटर की देखो आपकी कुछ सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा मीटिंग ही तो म्यूट है। अच्छा एक बार वहां पर सिस्टम खोल के रखना, ठीक है? अभी बताना मेरे को, ठीक है? अभी वहां पर आवाज आ रही है इंटर वाले पे?
अभी भी आ रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। इवेंट चला दो तो एक बार, इसमें चला दो एक बार event। इसमें यूट्यूब डायरेक्ट खोल दो और आप लोग ऐसे पास करो। सर इवेंट का कहाँ पे चला है बोलो? ये वाला चला देगा 360 वाला? पर ये तो हमारा ही दिखा देगा। आईसीआई का इवेंट दिखाया ना। अभी देखो सर दिखाई दे रहा है? To meet the ever-changing demands of the financial landscape, adapting its curriculum and strategies to ensure that its members remain at the forefront of the profession. From just approximately 1,600 members and 2,000. मैं कह रहा हूँ 360 चला दो ना, हाँ हाँ वही चला रहा, वही चला अब एकदम सही आ रहा है। 360। फर्स्ट वाला ही है। From just approximately 1,600 members and 2,000 students in 1949, आवाज आ रहा है? ICAI has now grown to 3.8 lakhs members, more than 8 lakhs active students, 168 branches, and presence in 78 global cities in 47 countries. To commemorate this significant milestone, ICAI has planned a series of engaging weekly activities throughout the year. और फिर हम मिनिमाइज करेंगे तो हम हट जाएंगे। Activity every week, financial inclusion, environmental sustainability, distribution gap, marathon. ठीक है करने दो, होने दो, चलो हाँ फुल स्क्रीन कर दे रहे हो जाएगा। Food competitions, creative competitions, and various other programs by Central Committee of ICAI. ICAI invites its members and students and people at large to be part of this क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन तो फुल स्क्रीन है। ठीक है, ठीक with professionalism and ethics and work of सर ICAI. अब अगर इसको हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगा ना। मेरे को इसी पेज पर रहना पड़ेगा अगर ये नहीं तो फिर मीटिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर मेरे को इस पेज पर ये दिखाना है तो फिर मीटिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमको अपने आप को मीटिंग में नहीं देख पाएंगे, हमको भी यही स्क्रीन ओपन करके रखनी पड़ेगी। मतलब हम जो बोलेंगे वो बच्चों को दिखाई देगा, बट हम मीटिंग में नहीं जाके बोल पाएंगे, हमको बाकियों की आवाज नहीं सुनाई देगी, हमको बस ये सुनाई देगा। I truly urge you to register camp for the social cause. At the moment you donate blood, you save lives. I am Daksh Marjori and proud chartered accountant. I have been donating blood since quite some time. I strongly believe that donating blood is my way to contributing towards the society. I have pledged to donate चलने देते हैं ना सर, बच्चों को तो मेन स्ट्रीम ही देखना, अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं हम सब। Thank you. My name is Naman Arora. My brother is a proud CA. I have always seen him donating blood. He deeply believes that the biggest happiness on this earth is saving a precious life. As Institute of Chartered Accountants of India is organizing a blood donation camp, I am so excited to donate the blood for the first time. I request the youngsters to register in the camp organized by ICAI. Come, let's join hands and save lives. This is Akshita, and I'm currently doing my articleship, and I'm associated with ICAI. It gives me immense pleasure to donate blood at the blood donation camp organized by our institute. Blood donation is something which I hold very close to my heart, and I would urge everyone to do the same.
Start today by registering yourself at ICAI Blood Donation Camp. The Institute of Chartered Accountant of India is organizing a blood donation camp across its branches. As a proud daughter of a chartered accountant, I am elated to be a part of this mega event and contribute towards humanity and mankind. This is our chance to make a difference and give back to society. So what are you waiting for? Take a pledge, donate blood. Across sectors like infrastructure, real estate, information technology, telecom, healthcare, and SME, a vibrant India continues to surge ahead, emerging as a market with enormous untapped potential and a destination for global investments. As an integral part of this growth story, the role of chartered accountants has expanded to a wider canvas, a role that is cross-functional, multidimensional, and multifaceted. The cornerstone of this profession was laid in 1949 by an Act of Parliament with the establishment of a statutory body called the Institute of Chartered Accountants of India, or the ICAI. The ICAI plays a pivotal role as partner in nation building by assisting and strengthening the financial system in different tiers of government, suggesting measures for boosting economic growth, tackling challenges being faced by key sectors of the economy, leveraging financial services sector, providing training to the officials at center and state levels in professional areas, educating investors on the nuances of the capital market, and much more. The ICAI curriculum is aptly designed by combining education, training system value-added soft skills, and personality development to produce globally competitive accounting professionals. Expanding knowledge resources, creating talent pools, nurturing young professionals. Over the years, the ICAI has played a pivotal role in formulating and implementing a host of academic initiatives aimed at keeping chartered accountants on the leading edge of business and industry. ICAI has been making ongoing contribution to quality assurance through disciplinary, peer review, and financial reporting review. These are aimed at ensuring and enhancing the quality of audit and assurance services offered by chartered accountants. ICAI is also playing an increasingly proactive role on the international front and has signed MOUs and MRAs with various accounting bodies, which entails working in tandem with each other to provide synergy. ICAI is the founder member of IPAC, CAPA, SAPA, and IN, and its members hold important positions on the boards and committees of these organizations. As India integrates with the global economy, the ICAI is playing a key role in updating Indian professionals and businesses by providing education, knowledge resources, and practical guidelines in the relevant areas. The ICAI has been constantly formulating new accounting standards as well as revising the existing ones, with the objective to bring the Indian accounting standards in line with the international accounting standards. This has a far-reaching impact on business reporting and holds enormous benefits for capital markets and the investor community. ICAI truly believes that women's participation is essential for the nation's development. They have the qualities of dedication, consistency, hard work, and honesty, which are the need of the hour.
Education is one of the most important means of empowering women with the knowledge, skills, and self-confidence necessary to participate fully in the development process. ICAI offers equal opportunities to women, and this is evident from the fact that year after year, top positions in CA examinations are being secured by female students. Creating benchmarks, raising standards, sharing knowledge, evolving solutions, nurturing a new generation of professionals, participating in the writing of India's success story. The ICAI moves ahead ceaselessly, working towards a brighter tomorrow. Institute of Chartered Accountants of India, a charter for excellence. Words matter. Ideas drive change. And wisdom can transform the human action. These are the words, ideas, and wisdom that transformed profession of chartered accountancy over the years. Our forefathers and their vision of modern India, driven by strong economic foundation, led to the setting up of Free India's premier accountancy institute. The Institute of Chartered Accountants of India, or ICAI, in the year 1949. From the past 70 years, ICAI and its members have followed the essence of its motto, Ya Esha Sukteshu Jagarti, the person who is awake in those that sleep. As our nation's democracy was being shaped, the responsibility of shaping the future of accountancy profession, the strongest pillar of a robust economy, was entrusted to the forefathers of accountancy profession. They not only set the highest standards, but also paved the way for the generations to follow. And what followed thereafter, as they say, is history. This 70 years journey has indeed made ICAI a treasure trove that will enrich the path of future generations to build a resilient new India. Words matter. Ideas drive change. And wisdom can transform the human action. These are the words, ideas, and wisdom that transformed profession of chartered accountancy over the years. Our forefathers and their vision of modern India, driven by strong economic foundation, led to the setting up of Free India's premier accountancy institute. The Institute of Chartered Accountants of India, or ICAI, in the year 1949. From the past 70 years, ICAI and its members have followed the essence of its motto, Ya Esha Sukteshu Jagat. Please welcome the Honorable President of ICAI, CA Aniket Sunil Talati. Please welcome the special guest for today's function, Honorable Minister Sri Rao Inderjeet Singh. We have with us Vice President ICAI, Sri Ranjit Kumar Agarwal. CA Devashish Mitra, immediate past President ICAI. To his right, CA Dr. Jay Kumar Batra, Secretary ICAI. And closest to me, CA Gaurav Garg, Chairman NIRC ICAI. The
chief guest for today's 75th Chartered Accountants Day is the Honorable President of India, and we await her presence. Honorable President of India, ladies and gentlemen. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति आप सभी से अनुरोध, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं. Kindly rise for the national anthem, please. धन्यवाद. आप सभी को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी सीए डे. 1 जुलाई 2023 आज की तारीख विशेष. इस अवसर पर आज के समारोह की मुख्य अतिथि हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. विशिष्ट अतिथि हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री. स्वागत कीजिए सी अनिकेत एस तलाटी का, प्रेसिडेंट ICAI. सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ICAI. सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ICAI. सीए डॉक्टर जय कुमार बत्रा, सचिव ICAI. और सीए गौरव गर्ग, चेयरमैन NIRC ऑफ ICAI. राष्ट्रपति जी से निवेदन है, दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करें. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा.
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा स्थिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा कार्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता। आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो हंस वाहिनी, वीणा धारिणी, ज्ञान वाहिनी, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। और अब मैं अनुरोध करूंगा सीए अनिकेत सुनील तलाठी, प्रेसिडेंट ICAI से, कि समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति महोदय को सम्मानित करें। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के मुखिया, संविधान के रक्षक। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was sworn in as the 15th president. Born in a Santali tribal family on 20th June 1958 in Odisha, Madam Draupadi Murmu has devoted her life to empower the marginalized sections of the society and deepening the democratic values. पिछहत्तरवें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा सीए डॉक्टर जय कुमार बत्रा जी से, सचिव ICAI। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। This is the shlok which is taken from Taittiriya Upanishad, which says, honor your mother as God, honor your father as God, honor your teacher as God, and honor your guest as God. With this word, following the tradition of culture, ethos, ethics, values of our great country India, on behalf of the world's largest professional accounting body, I would like to extend a very hearty warm welcome to our most valued invited chief guest, the First Citizen of India, President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji. We are extremely privileged to have with us the Honorable Minister of State for Corporate Affairs, Shri Ram Indrajit Singh ji. We welcome you, sir. I have the honor to welcome our Honorable President, CA Aniket Sunil Talati ji. I also extend my warm welcome to the Honorable Vice President of ICAI, CA Ranjit Kumar Angarwal ji. Sir, presence of both of you on the dais is always a source of motivation for all of us. I also extend my warm welcome
to our immediate past president, CA Dr. Devashish Mitra ji, who always says work in teams, which is always better. I also welcome CA Dhruv Garg ji, Gaurav Garg ji, the chairman, NIRC. We all know that the Institute of Chartered Accountants of India is a statutory body established under the Act of Parliament by the Chartered Accountants Act 1949. ICAI is the regulator and developer of the accountancy profession in India. And this is the day we should remember, we should recall, we should pay homage to all our forefathers who have done significant contributions for the growth and development of the accountancy profession in India. The profession of chartered accountancy is the most reputed, respected, rewarded, renowned profession, which is the globally trusted profession across the world. And today, ICAI is known for its excellence in technical and ethical issues, maintaining and sustaining the stringent examination and education standards. India, at ICAI, we follow the G20 theme, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. And it marks the Amrit Kal, beginning from the 75th anniversary of India's independence from 15th August 2022, and it will last. It will lead to the centenary of India's independence, hoping for the prosperous, inclusive, developed society, making India Atmanirbhar Bharat, the Vishwa Guru Bharat. And I think the chartered accountants will give their maximum contributions toward the economic development of the country. Like this, in ICAI, I follow your ICAI, my ICAI, our ICAI, one ICAI, new ICAI, with our ICAI, my ICAI, one ICAI, new ICAI, with excellence, ethics, independence, integrity, innovation, intelligence, strategy, sustainability, technology, transparency, trust, and transformation. And I'm very sure the ICAI will continue to be the custodian of the public interest and national welfare as a partner in nation building. And with these words, I welcome all the dignitaries on the dais, Honorable President of India, Honorable Minister of State for Finance, President ICAI, Vice President ICAI, immediate past President, Chairman NIRC, all distinguished Central Council members, all distinguished Regional Council members, the Chairman of the Regional Council, all government nominees which are here to be a part of this momentous occasion. I also welcome all our past presidents and past council members, all officials, senior officials from the office of Honorable President of India, Ministry of Corporate Affairs, other statutory regulatory bodies, professional institutions under the Ministry of Corporate Affairs, represented from the media, and all my students, other members who are here to be part of this joyous moment occasion, and all those who are also witnessing this ceremony through virtual mode. With these words, I welcome you all to this joyous occasion of 75th Chartered Accountants Day. Thank you very much. Thank you very much, CA Dr. Ajay Kumar Batra. I would like to request now CA Ranjit Kumar Agarwal, respected Vice President ICAI, for his address on the occasion of 75th Chartered Accountants Day. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत
राष्ट्रपति महोदय, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 75वीं सालगिरह में स्वागत है। ऑनरेबल मिनिस्टर, our president Aniket Talati, immediate past president Devashish Mitra, our secretary Jay Batra, chairman of the NIRC, all the distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome all of you in this very, very historical day, which we are celebrating today as a 75th foundation day of the Institute of Chartered Accountants of India. 1947, when our country got independence, a need was felt how to augment the revenue of this country, how to set the financial discipline in this country, and how to set the professional standards in this country. And the vision of our forefather, that point of time, within next 2 years, in 1st of July 1949, a body was formed, and that body was Institute of Chartered Accountants of India. That point of time, there was no existence of IITs or IM. And the kind of sheer knowledge these professionals have, the forefather thought the Institute of Chartered Accountant India, the chartered accountant of this country, can guide the independent India into the growth and development of this country. And on 15th of August 1949, the Institute felt what should be the vision of this Institute, what should be the logo of this Institute. And one of our members approached Rishi Aurobindo. And Rishi Aurobindo gave the emblem which you can see today. The emblem given by the Rishi Aurobindo, which we have adopted on 15th of August 1949, Ya Esu Suktesu Jagarti. The Garuda, the eagle, flying above the sky, foresightedness, sharp eye, and that was resemblance with the vision and the character of the chartered accountant. That's why this eagle or Garuda was adopted by the Institute. Our first president of country, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated, when this institute was formed, our head office building in this New Delhi. And after the first president of India inaugurated the ICAI building, after this, there are 5 presidents of India has graced the podium of this institute. And today, the person who is here, the person is the first president of India who was born in independent India, second women president of India, coming from the very, very humble background, which resembles the majority of the Bharat, which we call it say Bharat. The madam represent that Bharat, coming from that humble background. And the madam has connection with the commerce also. She was in state of Odisha as a minister of state for commerce also, from that point of time when she was in the state of Odisha. So we welcome madam in this largest accounting body of the institute. The way this country is growing, $3.5 trillion, youngest population of the world, more than 7% growth, and the kind of technology has advanced in this country, the growth and the development of this country can well contribute by the
members of this institute, that is chartered accountant. We have one of the unique initiative we have taken in recent past, and that is called UDI, Unique Development Identification Number. Now, the initial thought was that how the impersonation of the chartered accountant through signature was made by the various people. So the institute thought how to prohibit that, and the UDI was formed. But now the concept of UDI has become so vast. Now this institute has the monitoring aspect. They are now monitoring which chartered accountant are giving what kind of service. We know what you are catering, but we don't want to know whom you are catering. And with this data, we are in a position to help the government to frame the legislation and the policy of this country, how the chartered accountant who are contributing immensely in this country can contribute in the growth and development of this country. I can see today by standing here, it's a momentous occasion. At the same time, it's an emotional moment also for all of us. What should be the ICAI, which we have seen in last 75 years? What should be the vision of next 25 years? How you and we can perceive what should be our institute in next 25 years? We have 8 billion people in this planet, 200 countries, 182 accounting body of the world. And there are only 3 million, 30 lakh chartered accountants in this entire world. And we, as an institute, are 14%, 14% of this 3 million chartered of this world. So the kind of young population we have, the vision of this institute, I can perceive the hard work, the young population, and the kind of commitment the Indian people have. I can foresee this institute in next 25 years can lead the entire accounting profession of the world. I have only 3 things to say: quality, credibility, and consistency. These are the 3 virtues we are working in last 75 years, and with the same virtue, we want to work for next 25 years. And while standing here, I want to see this institute when I will not be there. When my son asks somebody, what was your father? So he should say proudly, my father was the member of the Institute of Chartered Accountant of India. Thank you very much. Jai Hind, Jai As. Thank you very much, CA Ranjit Kumar Agarwal ji. And now I'd like to invite someone who embodies 75 years of ICAI journey. His father sat in the CA examination in 1949. His grandfather. His father served as the president of the institute, and now he is the 3rd generation under whose leadership ICAI is growing from strength to strength. Please welcome CA Aniket Sunil Talati. Respected Rashtrapati Ji, the chief guest for the 75th Foundation Day, or as we call it very fondly, Chartered Accountants Day, the first citizen of India, somebody who is the pride of India, Madam Srimati Draupadi Murmu Ji, I welcome you on behalf of the Institute. And thank you so much for gracing this occasion. The guest of honor, the Honorable Union Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs, Shri Rao Inderjit Singh Ji. Sir, thank you for gracing this occasion also. The Ministry of Corporate Affairs is the parent ministry for the Institute, and we function under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs, and it's wonderful to have
your patronage on this historic day. The Honorable Vice President of the Institute, C. Ranjit Kumar Agarwal ji, the immediate past President, Debashish Mitra ji, galaxy of past presidents who are seated here, the Chairman of NIRC, Secretary ICAI, my colleagues in the Council who I had the opportunity to introduce Honorable Madam with just before we entered this hall. And the Central Council truly represents mini India. We have council members from the north to all the way down in Chennai, Karnataka, Hyderabad and Visakhapatnam, from west in Gujarat, from Baroda and Ahmedabad, right up to the east in Guwahati, and all the Central Council members join in this historic celebration. So I welcome all of them. The regional council members in all 5 regions who are watching this program live. 168 branches. Yes, that is the size of the institute today. 168 branches across India. 80 overseas chapters and representative offices who are equally excited, madam, to hear your address and motivation for the profession of chartered accountancy. To all the dignitaries who are off the dais, officials from the President's office, from the MCA, invited guests, ladies and gentlemen. It's a matter of honor and privilege for me to address on this momentous occasion of the 75th Foundation Day of the Institute. And yes, it's a matter of personal reflection for me, as was rightly mentioned, as my journey with the Institute, though my age is not 75, but the history which started with grandfather giving the first exam in 1949, the very first examination, as it was called, happened to come all India first, served the council for 9 years, and then, of course, father was the president in 2007, and today, I think destiny has been truly kind to me that I got the opportunity to preside over this council, which is one of the finest councils in the history, the 25th Council of the Institute, and representing, madam, today, close to 4 lakh chartered accountants and over 8 lakh active students. So, madam, on behalf of the 12 lakh family of CA and CA pursuing students, thank you for gracing us. As was mentioned, the Institute of Chartered Accountants of India was established in the year 1949. The Act was passed by the Constituent Assembly on 9th of April 1949. It received the assent of the Governor General on 1st of May 1949 and was constituted on 1st of July 1949 as an autonomous body to regulate the profession of chartered accountancy. Our journey has been a testament of our growth. Our presence today has expanded from, madam, 1,600 members who joined the Institute in 1949, and by the end of the year, close to 2,000 students pursuing chartered accountancy. And today, what I'm delighted to mention to you, to the Honorable Guest of Honor and the entire membership, is that back then, our membership and student came from a few hundred zip codes or postal codes or PIN codes, as we call them. And today, as I address you on 1st of July 2023, I am delighted to mention that we have students and members from close to 17,000 zip codes in this country, 17,000 out of the 19,000 postal codes. And madam, therefore, this is one single profession because of the reach that it has across the India. Every student in any part of the country can pursue his dream to become a chartered accountant. It is still very proudly, I can say, one of the most affordable professional courses in the world. And even today, when a girl or boy qualifies and becomes a chartered accountant, the parents cry unconsolably because they know for a fact that the destiny of not just their child, but their entire family is going to change forever by getting this degree of chartered accountancy. And Honorable Madam, I'm delighted to mention to you that today we had the council meeting, and in that we have released a policy that the council is determined to implement in the next 2 years. That though we have presence in more than 300 districts of India, through our branches, regional councils, study circles, study chapters, and study groups, it is the aim and the commitment of this council that in the next 2 years, madam,
we will have a reading room facility in all 700 districts of India. That is the resolution we have taken. Madam, today in the council meeting, we have also decided that starting today, the forensic standards, the institute has been long known for accounting standards, auditing standards, ethical standards, valuation standards, which have been developed and are internationally benchmarked. But today, from 1st of July, as forensics is getting more and more important, the forensic accounting and investigation standards have been made mandatory. We have also resolved, and we are working very closely with the President of India. In one of his addresses, gave us one line by mentioning chartered accountants as partners in nation building. And I believe that is one virtue that all of us have taken to heart. And it is with this intention, madam, that we carry out activities not just for membership and students, but we carry out a finance and tax literacy drive, Vittiya Gyan ICAI Ka Abhiyan, where we try and educate the common man about the importance of finance and tax, and especially with digital transactions and digital form of payment gaining so much traction. I believe it is incumbent upon all of us as professionals to make sure that the society and the general public are not in any way disharmed or disadvantaged by this and made a victim by some people who have some unintended causes. And therefore, because of this, we have the finance and tax literacy drive. We also, madam, promote the MSME. And last year, as it was 75th year of India's independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, we decided that for 75 days, through 75 cities, traversing 22,000 kilometers, we ran a MSME Yatra. And I'm delighted to mention that post the Yatra, the MSME registrations, which were close to 1 crore, could reach a number of 1.6 crores. And a huge effort was made by chartered accountants in spreading awareness with regards to MSME registration. Madam, we also today focus not just on financial matters, but non-financial reporting. And as the world is looking towards sustainability, the Institute had set up the Sustainability Reporting Standards Board. And today, along with financial reporting, we are focusing on non-financial reporting and means of sustainability and going green. It was a matter of great pride for us last year to organize and host the 21st World Congress of Accountants, which was attended by more than 10,000 participants. This is a conference, madam, which happens once in 4 years, and for the first time in 118 years, it came to India. And let me tell you, as we see the stature of India and the respect the Indian Prime Minister or any Indian delegation gets across the world increasing, it is post this World Congress that even the stature of the Institute of Chartered Accountants of India and every chartered accountant going abroad has risen tremendously, and we are very proud of the World Congress of Accountants which was hosted by us. Finally, madam, today is also going to be a historic day, because with your worthy hands and in the presence of the Honorable Minister of State for Corporate Affairs, we will launch the new course curriculum. A course curriculum which has been eagerly awaited, not just by membership, but by students who are pursuing this course, and more importantly, by students who are planning to enroll for chartered accountancy. Yesterday was the last day for registration of foundation, and I'm delighted to mention that the want and craving and demand for chartered accountancy is highest ever this year in any of the recent past. We have crossed all registrations of last 5 years, and the record participation and interest from students only shows the importance of this CRET. The CRET changes a lot of aspects. Madam, we are now introducing self-paced learning and online examination through the self-paced learning modules. We have a 2-year uninterrupted articleship. There's a huge focus on technology and ethics, and I'm delighted that with Board of Studies taking all the efforts over the last 2 years to make sure that this CRET could reach
I'm grateful to the Ministry of Corporate Affairs for giving their consent. And today is truly going to be an historic day when we launch this new curriculum, which will be a change agent for socio-economic change for the entire nation, and many more students from far-flung areas will be able to pursue this course of chartered accountancy. Finally, I will only say to all the members, to all the students who are pursuing chartered accountancy, for an institute, it is always nation first. And as I say, and I would request all of you to say, believe that I am the I in ICAI. शुरुआत भी आपसे, अंत भी आपसे, इंस्टीट्यूट भी आप, इंडिया भी आप. जय हिंद, जय ICAI. Thank you very much, CA MK Sunil Tarathi, President, Institute of Chartered Accountants of India, for your inspiring. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो वो इस बात पे बल देती है कि लर्निंग जॉयफुल होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिले, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें ताकि सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन तमाम पहलुओं को अपनाते हुए ICAI आज 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के शुभ अवसर पर अपनी नई एजुकेशन और ट्रेनिंग स्कीम को लॉन्च कर रहा है. मैं गुजारिश करूंगा श्री राव इंद्रजीत सिंह से, माननीय केंद्रीय कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री और साथ ही प्रेसिडेंट ICAI से, कि आप एजुकेशन और ट्रेनिंग स्कीम को लॉन्च करें. इस ब्रोशर का अनावरण करके इसकी पहली कॉपी राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें. It truly is a momentous occasion as we're all set to launch the new education and training scheme of ICAI. As President ICAI said, we are all eagerly awaiting for this. Thank you very much, Minister, for unveiling and now presenting the first copy to the Honorable President. Congratulations. So on 1st of July 2023, the new education and training scheme of the Institute of Chartered Accountants of India stands launched. All the best to all the students who have the dream to pursue the CA course. And you can see on the right hand side of the Secretary ICAI, two people and their team who have worked very hard. A round of applause for the Chairman Board of Studies and CA Dayanibha Sharma, Vice Chairman, and the entire BOS. Congratulations for the launch of the new scheme. और अब मैं आग्रह करूंगा आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री राव इंद्रजीत सिंह से उनके संबोधन के लिए. Minister of State, Ministry of Corporate Affairs, Minister of State, Independent Charge, Ministry of Statistics and Program Implementation और साथ ही Ministry of Planning. आप लोकसभा के सांसद हैं गुरुग्राम हरियाणा से. Your Excellency, Right Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, President ICAI, Ankit Sunil Talati ji, Vice President of ICAI, CA Ranjit Kumar Agarwal ji, past presidents, dignitaries of the dais, members of the CA fraternity, ladies and gentlemen. May I first of all congratulate all the chartered accountants and students on the 75th foundation day of this institution, which over the period of 7 decades has created a mark for itself as an institution of excellence, contributing for the financial stability and economic development of this country. It is a moment to cherish the gracious journey of 75 years of the institution. You have covered a long journey, and that is quite commendable. Today it is also celebrated as the GST Day, for which also your institution and members of the profession need to be congratulated. Since implementation of the indirect taxation regime in India, you always remained a great enabler and facilitator and played a very effective role
creating awareness about the various provisions of the new GST law, resulting in smooth implementation of GST regime and removal of all doubts amongst the taxpayers whenever required. The advancements in technology and digital transformation, like automation, artificial intelligence, and data analytics, necessitate that the profession must equip itself with the requisite skills to navigate this evolving landscape. These evolving technologies need to be taught to the students of the new age. In this direction, I am pleased to note that recognizing the needs of the digital era, new curriculum of chartered accountancy education and training that is being launched today equips the future chartered accountants with the requisite skills to embrace and adapt to these advancements. Chartered accountants are the growth engines of the financial economy of our country. To all the young CAs out there, I urge you all to have an entrepreneurial mindset. Startups, forensic, insolvency, and valuation are the new areas which require which have enormous opportunities in terms of employment, consultancy, and advisory services. I am pleased to know that the ICAI has taken many initiatives in these new areas of economy, like certificate course, Registered Valuers Organization, and Institute of Social Auditors of India. I am sure that with all these skills and building of these skills, initiative members will provide an exemplary service to the economy. I am happy to learn that the startup sphere has been conducted by your institute, which was conducive to the growth of startup ecosystem and provided a unique opportunity for startups to connect with the peers, industry experts, and to gain insights. I am happy to share the Ministry of Accounting Affairs Government of India has launched the MCA 21 as an e-governance initiative. It enables an easy and secure access of the MCA services to the corporate entities, professionals, and citizens of India, and ensures timely and speedy compliance of the MCA 21 application of compliance. The MCA application is designed to fully automate all processes related to the proactive enforcement and compliance of the legal requirements under the Companies Act 1956 and other applicable laws. This will help the business community to meet their statutory obligations. I acknowledge the ICAI and its members who are closely associated with the implementation of MCA 21 B3 project in India. Today, our economy is bouncing back from the COVID pandemic, and it grew by 7.2% in the financial year 22-23, faster than the 7% predicted in the earlier quarter. This has happened due to the boost in construction and other industrial activities which remained dormant during the COVID period. This fostered growth is also the result of MSMEs. They are a major contributor to the socio-economic development of the country. The MSMEs, for over the past so many years, have been continuously served by the large number of chartered accountants operating in every nook and corner of this country. I must say that this profession is the life of the MSMEs ecosystem in India. So my congratulations to the members of the ICAI for their contribution to this important sector too. Your profession has always been seen by the government and other stakeholders with great expectations, and you should leverage it. Once again, many, many congratulations to you all in the times to come. Thank you very much, Honorable Minister Sri Rao Inderjit Singh, for your guidance and best wishes, and also for unveiling the brochure on the new scheme of education and training.
We now present a short video which will tell us more about the new features of this scheme. The Institute of Chartered Accountants of India launches the new scheme of education and training 2023 at the hands of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, on July 1st, the CA Day. This day also marks the start 75 years of establishment. The unique features of the new scheme include ethics and technology in all core subjects at the final level, multidisciplinary subjects and specialization, redefined curriculum with 6 papers each at the intermediate and final levels, 2 years of uninterrupted practical training, experiential learning with self-paced online modules, focus on strategic decision-making for providing business solutions, emphasis on emerging technologies training, 30% MCQ-based examination at the intermediate and final levels, recognition as Business Accounting Associate, country-specific international curriculum and training. The new scheme is in alignment with the National Education Policy 2020 and international education standards. The new scheme opens the doors to international practical and industrial training and country-specific curriculum. The new CA curriculum is aimed to make future and market-ready professionals with an enhanced emphasis on soft skills and information technology training with a sandbox approach for experiential learning. The first foundation exam under the new scheme will be held in June 2024. The first intermediate and final exams under the new scheme will be held in May 2024. With the new scheme, ICAI's Chartered Accountancy curriculum is going global. Come join us as ICAI redefines Chartered Accountancy education to scale new horizons of success. धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के रिपोर्ट सभागार में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस समारोह मनाने के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से उनके आशीर्वचनों के लिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की 75वें वर्ष के अवसर पर उपस्थित केंद्र सरकार में कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आईसीए के अध्यक्ष श्री अनिकेत सुनील तलाटी जी, मंच पर आसीन आईसीएआई के अन्य पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, members of ICAI, students of Chartered Accountancy course, देवियों और सज्जन। ICAI के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी के साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। ये वास्तव में सुखद है कि आपका ये उत्सव देश की गौरवशाली यात्रा के साथ भी जुड़ा है। आप सब आजादी के 75 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये न केवल सीए समुदाय के लिए बल्कि देश के संपूर्ण अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पेशों के लिए एक विशेष दिन है। 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपने विभिन्न आयोजन के लिए जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज जो आईसीआई का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबको व्यवसाय क्षेत्र के एक ऐसे मजबूत स्तंभ के रूप में देखती हूँ जिससे सुशासन को बल मिलता है।
आपको अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन में अर्थ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक अच्छी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था विश्वास पर निर्भर होती है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें निहित है समर्पण, ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्य के लिए प्रतिबद्धता। आप सब एक कठिन शिक्षा और कड़े प्रशिक्षण के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में इस समय लगभग 3.5 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। इसमें विशेष प्रसन्नता की इस बात है कि दिनों दिन इस व्यवसाय में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस समय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में महिलाओं की संख्या लगभग 42% है। मैं आशा करती हूँ कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा और आपका संस्थान भी अपने शताब्दी वर्षों के निकट होंगे, तो देश में प्रैक्टिसिंग वुमेन चार्टर्ड अकाउंट्स की संख्या 50% से अधिक होगी। आप सब भी मानेंगे कि महिलाएं सामान्यतः कुशल फाइनेंस मैनेजर या अकाउंटेंट होती है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण इसका एक उदाहरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में घरेलू बचत की एक प्रथा है। विशेषकर महिलाओं की आदत होती है कठिन समय के लिए बचत करना। एक खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए ICAI ने वित्तीय और कर साक्षरता अभियान शुरू किया है। अनैतिक तत्व द्वारा गरीब और भोले लोगों को बचत पर अधिक ब्याज का लालच देकर धोखा दिया जाता है। आपका अभियान उनके इस तरह की धोखाधड़ी से बचाएगा। ऐसे लोगों की बचत का संरक्षण और संवर्धन करना भी आप सबका सामाजिक दायित्व है। मेरा ध्यान ICAI के विजन 2030 के स्टेटमेंट की ओर गया। आपने इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव परिदर्शिता तथा नैतिकता की कसौटी पर आपने अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। ये एक सार्थक प्रयास है। इसके साथ ही अपने कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का भी रास्ता अपनाया है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोत्साहित करने का भी रास्ता अपनाया है, जिससे चार्टर्ड अकाउंट्स तेज गति से ही हो रहे बदलाव को अपने व्यवसाय में समाहित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन तकनीकी बदलावों पर जोर देना चाहूंगी जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। डेटा का मैनुअल असेसमेंट लगभग अप्रचलित हो गया है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिपक्वता प्राप्त करेगी, मशीनों द्वारा डेटा माइनिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के ढांचे से काफी बदलाव आएगी। लोगों द्वारा किया गया उलटफेर टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से सामने आ जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग अतीत की बात हो जाएगा। मेरी राय है ICAI को न केवल समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए, बल्कि इस व्यवसाय में सही और नैतिक प्रथाओं को लागू करने के लिए तकनीकी नवाचारों को उत्साहपूर्वक अपनाने का प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ICAI ने यूडीएन यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की
शुरुआत की है। इसके जरिए चार्टर्ड अकाउंट्स के प्रमाण पत्रों का सत्यायन सर्टिफिकेशन का बहुत महत्व होता है। आपके हस्ताक्षर और प्रमाण पत्रों के को देखकर देश के छोटे बड़े निवेशक अपने निवेश का निर्णय लेते हैं। गलत सत्यापन न सिर्फ लोगों के निवेश को डुबाता है बल्कि लाखों घरों के सपनों को भी तोड़ देता है। इसीलिए आपके व्यवसाय में प्रामाणिकता की बहुत आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आपके यूनियन के जरिए ये सार्थक प्रयास शुरू किया गया है। इस विषय अवसर पर वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के सफल आयोजन के लिए ICAI को बधाई देना चाहती हूँ। उसे ओलंपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन के नाम से भी जाना जाता है। मुझे ये बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया है, जिसमें 120 देशों का हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ICAI के क्षमता और सदस्य संख्या को विश्व में आदर से देखा जाता है। फिर भी हमारी फर्म्स विश्वव्यापी या बड़ी MNCs के स्तर पर नहीं पहुंची है। इस दिशा में प्रयास जारी है। मेरा मानना है कि इस प्रयास को और बल मिलेगा और अकाउंटेंसी फर्म विभिन्न क्षेत्रों में रेगुलेशंस पर ध्यान दे और लॉ फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करें। ये न सिर्फ ज्ञान का खेती बढ़ाएगा बल्कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए अपना प्रभाव दर्ज करने का ये उचित अवसर भी है। आज जब देश G20 के अध्यक्ष के नाते विकसित और विकासशील देशों की मेजबानी कर रहा है, ICAI को दुनिया के बेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में विश्व समुदाय को बताने का ये एक अच्छा अवसर है। ऐसे प्रयासों से आपकी कार्य पद्धति में निरंतर सुधार और विकास होता रहेगा। अप्रैल 2023 के महीने में GST रेवेन्यू कलेक्शन अब तक का सबसे अधिक रहा है, जो कि एक कीर्तिमान है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल करदाताओं बल्कि आप जैसे सभी पेशेवरों की प्रतिबद्धता का परिमाण है और देश के विकास में योगदान देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये ICAI का राष्ट्र निर्माण के एक प्रभावी भागीदार बनाता है। हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति आदरणीय अब्दुल कलाम ने आपको देश के विकास का भागीदार व पार्टनर कहा था। ये सरकार के साथ आपके प्रयास का परिणाम है कि देश में निरंतर टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स कंप्लायंस रेजिम की तरफ जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आपके कोई सुझाव के जरिए कर प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। कर नियोजन अच्छा है पर कर चोरी दंडनीय है। हर नागरिक किसी न किसी रूप से कर देता है और ये चाहता है कि उसके योगदान का समुचित उपयोग हो। कोविड-19 महामारी के समय में कल्याणकारी योजना चलाई गई और वैक्सीन का प्रबंध किया गया। इसी तरह गरीबी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू हुई है। ऐसे संदर्भ में आप सबका ये सामाजिक दायित्व बनता है कि देश के करदाताओं को कर प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित करें और उससे लाभ समझाएं। देश के विकास में आपकी भागीदारी की भूमिका तभी सार्थक होगी। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के व्यवसाय का एक पिलर ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस के रूप में देखा जाएगा।
आइए साझा दृष्टिकोण और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को और अधिक मजबूत बनाएं। हम सब उपलब्धियों का उत्सव मनाएं, अतीत का सम्मान करें और आगे आने वाली असीमित संभावनाओं को साकार करें। साथ मिलकर आप सभी एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जो उज्जवल, अधिक समावेशी और विकास के असीमित अवसरों से भरा होगा। मुझे विश्वास है कि आपके संस्थान के 75 वर्षों की गौरवशाली परंपरा आप सभी के लिए आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बनने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरणा सिद्ध करेगी। आप सभी को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ICAI को प्रोत्साहित करने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति महोदया आपका बहुत बहुत आभार। और अब आप सबसे अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम प्लीज। थैंक यू। Thank you very much. We would like to express our sincere gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, for gracing the 75th Foundation Day celebrations of the Institute of Chartered Accountants of India. And I think we all would agree that as Chartered Accountants, we are going to rededicate ourselves to the role of being a nation builder, to being a complete business solution provider, encompassing the core values of excellence, independence, integrity, and sustainability. So with that, we conclude the first part of the CA Day celebrations. We now hop across to the second part. So everyone is requested to remain inside the auditorium. We'll start with the second part in just a bit. And before that, we are playing a 2-minute video for your viewing pleasure. The Institute of Chartered Accountants of India was established on the 1st of July 1949, embarked on a journey to shape the future of the accounting profession in India. This year, on 1st July, ICAI will be entering in 75th year of excellence. Over the past 75 years, it has grown into a revered institution, thanks to our great leaders and torch-bearers for their excellent efforts. From the humble beginnings, the ICAI has been built brick by brick, guided by the principle of independence, excellence, and integrity. With each passing year, it has evolved to meet the ever-changing demands of the financial landscape, adapting its curriculum and standards to ensure that its members remain at the forefront of the profession. From just approximately 1,600 members and 2,000 students in 1949, ICAI has now grown to 3.8 lakhs members, more than 8 lakhs active students, 168 branches, and presence in 78 global cities in 47 countries. To commemorate this significant milestone, ICAI have planned a series of engaging weekly activities throughout the year. The whole 75th year will observe a new activity every week, such as financial literacy drive, environmental sustainability, recreation camp, marathon, walkathon, debate, quizzing, recreations, sport competitions, creative competitions, various other activities by Central Committee of ICAI. ICAI invites its members and students and
people at large to be part of this celebration. Resonate the world war with the standards of professionalism and ethics in work of ICAI. 75 years of journey. यही है सर, यही है, ICAI के साथ ही है। तो एक दो चीजें तो सर बहुत बढ़िया लगी। नवीन सर बोल रहे हैं, देखो नवीन सर अगर ओके बोल रहे तो चालू करते भाई, मेरे जो रूल्स है उसके बारे में बात करें। आप अरे मेरे को एक तो चीज तो बहुत अच्छी लगी जो कि पहले भी होती थी, अब नाम बदल के आ रही है। पहचान के लेवल अच्छा है। देखते सर हमारे स्टूडेंट्स जितने भी लाइव हैं अभी देखेंगे, मैं चालू सर देखो अभी कमेंट्स आ रहे हैं अकाउंट्स एंड इंटर, तो यार अभी इसके बारे में तो डिस्क्लोज होगा, बट अभी जो प्राइमा फेसिया बात समझ में आई है, लॉ का शब्द यूज कर रहा हूँ सर, सॉरी। तो सर इसमें एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी, पहले कोर्स हुआ करता था सीए के साथ में एटीसी, अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, जो बच्चा पूरा सीए कर पाता था वो एक का पेपर देके एटीसी बन जाता था। अब सर देखो ऐसा है कि कोर्स तो लंबा है बट ड्यूरेशन उसकी आर्टिकलशिप के पीरियड को 2 साल करके कम करी गई है। तो एक नई चीज लेके आए हैं, वो है BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज होने वाली है जिसके अंदर अगर आप इंटरमीडिएट भी पास कर जाते हो तो देखो सर सब लोग जानते हैं देयर आर 2 थिंग्स, वन इज डिग्री एंड अदर इज डिप्लोमा। तो अभी तक के प्रोग्राम से ये समझ में आया है कि जो BAA होने वाला है दैट इज अ काइंड ऑफ डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, जो कि जिसे हम कहेंगे सीए का छोटा भाई, तो वो छोटा भाई बनने वाला है यहाँ पर BAA। तो मेरे को तो ये बात इसमें सर एक तो जो सही लगी वो ये है, और इसके अलावा आप लोगों का व्यूज बताएं। क्यों? आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है एकदम क्लियरली। देखिए न्यू कोर्स का इंतजार हम लोग सब कर रहे थे, बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, अगस्त से लेके अभी तक कर रहे थे कि कब आएगा न्यू कोर्स, कब आएगा न्यू कोर्स। इतने दिन में तो बहुत कुछ आके चला गया लेकिन न्यू कोर्स नहीं आया। फाइनली न्यू कोर्स इज हियर। देखो बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी डिटेल्स है न्यू कोर्स में, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि न्यू कोर्स का इंटेंशन आपको समझना चाहिए। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द न्यू कोर्स? इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड मल्टीपल टाइम्स दैट द इंटेंशन इज कि हम लोग फाउंडेशन पे अगर कोई बच्चा क्रैक करके सीए को आगे बढ़ा तो हमें इंश्योर करना कि वो फाइनल भी क्लियर करे, वो बीच में ड्रॉप आउट ना हो। तो इसलिए एक ऐसा प्लेन बनाया जा रहा है आपके लिए जहां पर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ पढ़ाने के साथ आपको ये भी एश्योरिटी दी जा रही है कि इफ यू हैव द राइट टैलेंट एंड द राइट हार्ड वर्क, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू एंड यू विल क्रूज थ्रू द फाइनल स्टेज एज वेल। दूसरी बात जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छा है ये चीज का कि इन्होंने मॉड्यूल में काफी चेंजेस करके जो सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है, जिसमें इन्होंने एआई को इंटीग्रेट किया, विच इज वेरी गुड, जिससे अब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, अब हम लोग स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए एक बहुत दिन से अफवाह मार्केट में थी और मैंने पर्सनली चैट जीपीटी यूज भी किया, इसलिए बोलूंगा कि विल, एक ही सबटाइटल सब वीडियो में चल रहा था, विल एआई रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द करंट वर्ल्ड? AI will not replace chartered accountants. AI will help chartered accountants to do work more efficient. सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? अब नकुल सर इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन एक चीज मैं बस बोलूंगा, पहले हम लोग ऑडिटिंग में सैंपलिंग करते थे, अब AI आएगा तो ऑडिटिंग में लेवल ऑफ सैंपलिंग कम हो जाएगा, जो रीजनेबल अश्योरेंस देते थे अब उसमें रीजनेबल वर्ड की कमी होने के सिर्फ अश्योरेंस आए, ठीक है। तो हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसका कोई बात नहीं है, हमारी इंटेग्रिटी, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इवॉल्व होने वाला है। और बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बात जिसमें वो खुश है, नंबर ऑफ पेपर रिड्यूसिंग, सबसे बढ़िया बात ये बोलो ना कुछ सर, सबसे ज्यादा खुशी वाली बात यह है कि नहीं, नंबर ऑफ पेपर रिड्यूस हो गए। सर नंबर ऑफ पेपर्स तो 6 हो गए हैं, दैट इज कंफर्म, वो तो बोल ही दिया गया है। मतलब देखो तो हम केवल उन बातों के ऊपर बात करेंगे जो अभी तक डिस्क्लोज हुई हैं, अदरवाइज सारी बातें बेकार हैं, केवल उन बातों के ऊपर बात करते हैं जो डिस्क्लोज हुई हैं। तो दैट इज फॉर श्योर कि इंटर एंड फाइनल विल बी ऑफ 6 मार्क्स और 6 पेपर्स ईच लेवल, ठीक है जी। अब अगर आगे की बात करें सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपका मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि अब वो जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो हटके अश्योरेंस हो जाएगी, क्योंकि सर देखो मैं बताता हूँ आपको,
मीडियम साइज फर्म और जो बिग फोर्स होती है उनके अंदर ये सैम्पलिंग वाली चीज बहुत जबरदस्त होती है। मीडियम साइज फर्म के अंदर जो वाउचिंग करी जाती है ना, वो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, जबकि जो बिग फोर्स होती है वहां पर ये वाउचिंग तो ज्यादा नहीं, वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो जब ये एआई जुड़ जाएगा हमारे कोर्स के साथ में, तो बहुत 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 बढ़िया चीज हो जाएगी। और उसके बाद सर पता होगा क्या, कि हम सब जानते हैं प्रैक्टिकल के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बेसिकली। तो अब जब आप मैनुअल काम, अभी तक क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर से करनी है, जबकि वो सारे काम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपके सिस्टम्स करके देते हैं। तो दैट वुड बी मोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ताकि आप जब आर्टिकलशिप में जाएं तो उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को अपने एप्लीकेशन के ऊपर लगाएं और काम करना चालू करें। एनालिसिस करना आपको ज्यादा सिखाएगा अब ये कोर्स। अच्छा, तो बच्चे सर कह रहे हैं सिलेबस बता दो। भाई सिलेबस तो अभी डिस्क्लोज हो रहा है ना, अभी तक कहां आपने देखा होगा, इन लोगों ने सर ध्यान से सुना नहीं, इनसे ज्यादा सही तो हम सुन रहे थे। अभी पार्ट 1 कंक्लूड हुआ है, पार्ट 2 आना है। अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है, अभी हमारी प्रेसिडेंट गई है पार्ट 1 कंक्लूड करके। तो अब अगर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, आपको लाइव दिख रहा है कि वो जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो अब चेंज हो रही है। अब यहाँ पर आपका कंप्लीटली सिलेबस जो है वो डिस्क्लोज होने वाला है। तो सर बहुत अच्छी चीज है। और एक जो डिस्ट्रैक्शन रहती थी ना, एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता था, वो कह रहे थे 3 साल की आर्टिकलशिप। और बात भी जेन्युइन थी कि एक ही, कई बार क्या होता है सर, और ये बड़ी जेन्युइन बात है, हर सीए फॉर्म के अंदर हर साल नए नए क्लाइंट्स तो जुड़ेंगे नहीं। तो एक बच्चे को 3 साल तक एक ही क्लाइंट के ऊपर हो सकता है एक ही नेचर का काम भी करना पड़ता था। तो उसको एलिमिनेट करके अब हम लोगों ने 2 साल की आर्टिकलशिप करी, जो कि बहुत अच्छी चीज है, वेलकमिंग स्टेप है। और शायद, अब मैं थोड़ा स्पेकुलेटिव हो रहा हूं, शायद ये भी हो सकता है कि आर्टिकलशिप बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही चालू हो, विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, क्योंकि बच्चा इंटर जीवन तो पास कर लेता है और पास करने के बाद उसने ऑडिटिंग पढ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो बढ़िया काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब मैंने मेरे जितने भी दोस्तों को फेल होते हुए देखा है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रुप 1 क्लियर किया, आर्टिकलशिप पे चले गए, अब आधा ध्यान आर्टिकलशिप पे, आधा काम पढ़ाई पे, तो ना तो पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, उसके चक्कर में अटेंड का टाइम लग रहा है। पॉइंट, ये चीज एकदम सही बोली है, ये बात एकदम फैक्ट है। जो ड्राफ्ट भी निकला था उस पर भी थी, और मोस्ट प्रोबेबली अभी प्रोस्पेक्टस में भी आई जाएगी। प्रोस्पेक्टस का ही बड़े बेसब्री से इंतजार है सबको। सब टीचर यहाँ पर एक चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे वाले सब्जेक्ट का भाई निकालो तो मॉड्यूल, तो हम बनाए बच्चों सिलेबस में क्या है। जेडी सर कल से 20 बार कॉल कर चुके हैं एक ही बात को लेके, मॉड्यूल आया सर, मॉड्यूल आया। हमने सर आएगा तो हम पहले आपको फोन करके बताएंगे आए यार। देखो इसके पीछे 2 रीजन है। इसके पीछे पहला रीजन ये है कि मेरे अंदर खुद के अंदर एक्साइटमेंट है। और तो देखो मेरे को मालूम है, चैप्टर्स अपन सबको मालूम ही है, तो किसमें कितना चेंजेस एवरीवन नोज कंप्लीटली, वो भी बात नहीं है। लेकिन मुझे क्या है, थोड़ी सी उम्मीद है कि क्या एग्जिस्टिंग कोर्स में भी ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन्हें कम टच किया जाता था, क्या वो इंक्रीज होने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे एग्जांपल के लिए कैलकुलस चैप्टर आज तक बहुत खराब था, नए कोर्स में एक्सपेक्टेड है नगुंदर से बोलते वो क्या बोलते स्पेकुलेट, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली वही जो भविष्यवाणी की बात चल रही थी, इसमें गैम्बलिंग की बात चल रही थी, उसमें मेरे जो भी अरे यार अब देखो भावनाओं को पकड़ो यार, देखो थोड़ा भावनाओं को पकड़ो। मैं इसीलिए बीसीआर नहीं पढ़ाता हूँ, आप समझ रहे हो क्या, यही रीजन है। आप भावनाएं समझ रहे हो, बट पंडा से टॉपिक वो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलस का भी नाम चेंज हो गया, बिजनेस वर्ड उसके अंदर आने वाला है, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है। दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस कैलकुलस, ऐसा कुछ उसका नाम होने वाला है। जगन सर आई कंप्लीटली एग्री। मेरे ख्याल से शायद आपके कोर्स के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स वाली चीजें आ जाएं। और सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ना फाउंडेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कहूं। सीए इंटर G1 इंटर G2 दोनों अकाउंट्स एक हो रही है। एक और स्पेकुलेशन करे तो ऐसी उम्मीद है कि 50 मार्क्स 50% होने वाला है पासिंग रिजल्ट इंडिविजुअल, देखो फाउंडेशन डिफिकल्ट तो होने वाला है, पर वो अच्छी बात है। देखो मैंने एक चीज देखी सर, जैसे एक बार आईआईटी निकल गई, एक बार आपकी नीट निकल गई, लाइक आफ्टर दैट क्लियरिंग जेईई और दिस टाइम ऑफ एग्जाम्स, ये कंफर्म है आप इंजीनियर बन जाओगे या विद रिस्पेक्ट ऑफ योर एग्जाम। यहाँ पर भी वो सर्टिफिकेट आ गया तो बच्चे का ट्रस्ट बढ़े, तो दैट इज गोइंग। सबसे क्या बात है, चीटिंग हट गई।
चीटिंग हट गई मतलब पहले आईसीआई फाउंडेशन में बोलता था 4 पेपर और पढ़ाता 6 सब्जेक्ट था। अब फाउंडेशन में 4 पेपर है, 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। आप चीटिंग हट गई, हमको सबसे अच्छा ये लगा भैया चीटिंग नहीं कर रहे हैं। जितने को भी पढ़ा 100 नंबर का सिलेबस रहे, पूछ 70 नंबर का रहे, हमको बड़ा फेयर लगता है। ये बहुत अच्छा किया है कि अब आप 100 नंबर का सिलेबस पढ़ा के 100 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछ रहे। और इसमें भी सर एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ, सीपीडी में 2-4 चैप्टर जैसे लिमिट कम्युनिटी सैम्पलिंग, ऐसे 2-3 चैप्टर थे जो फाउंडेशन में हटा दिए, पढ़ा रहे थे, अब वापस से आ गए। तो मतलब जो आपके साथ जो आपकी फीलिंग है ना, वही फीलिंग है, पढ़ा मैं भी रहा हूँ, सैम्पलिंग मुझे भी समझाना पड़ेगा, बट अब मैं चैप्टर में समझाऊंगा तो थोड़ा डिटेल जाता हूँ। ऐसे डिटेल्स तो बच्चा होता है सर आप फोकस समझा रहे, अरे भाई अब तेरे को समझ में आएगा। और एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब यहाँ पर बच्चे कुछ थोड़ा सा घबरा रहे हैं, 2-4 मैसेजेस भी मेरे पास आए ये बोल के कि सर फीस बढ़ने वाली है, फीस बढ़ने वाली है। बेटा देखो अभी तक ना एग्जैक्टली फीस होगी कितनी वो दिया नहीं गया, ठीक है, तो आप उसमें रिलैक्स करिए। और अगर फीस बहुत, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको दूसरे सेंस से मत ले लेना, मैं बस बोल रहा हूँ अगर फीस बहुत बढ़ भी गई, मतलब अगर मान लो बहुत बढ़ गई, तो भी इतनी नहीं बढ़ने वाली कि भैया कि तुमको कुछ पता लोन लेना पड़ जाए पढ़ाई करने। सर मैंने वीडियो बनाई हुई है, एमकॉम बीबीए से कम ही रहेगी। हाँ मतलब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लाखों व्यूज उस वीडियो के ऊपर। सर टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अनअकैडमी से अगर कोई बच्चा करता है जेडी सर अप्लाई करने के बाद, तो सब सारे खर्चे मिलाने के बाद भी मैक्सिमम फीस आपकी 1.5 लाख जाती है आज की तारीख में। तो बढ़ के अगर 2 लाख भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे टेक्निकल और समझो 1.5 लाख रुपए सी निकलता है आपका पूरा। इतना भी कोई चेंज नहीं होने वाला, एस्टिमेटेड स्पेक्युलेटिव यही है 20-25% से फीस बढ़ेगी। वो 9,200 है वो 11,200 हो जाएगा, उधर 22-23-24 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। आपको मतलब ऐसा अपनी भी फीस बढ़ जानी चाहिए, बस हमारी भी फीस बढ़ जाए तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, मेरे को आता है स्पेकुलेशन बोलने, आदित्य सर आप बताओ मेरे को आता है कि नहीं आता है स्पेकुलेशन बोलने? बिल्कुल सर, बच्चों को थोड़ा एंटरटेन कर रहा था। आदित्य सर हम आदित्य सर आ गए। हाँ जी सर, मैं वही देख रहा था, मैं कब से सुन रहा था, सबने सही चीजें बोली है कि ना वेलकमिंग स्टेप है। बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है इस चीज को लेकर, बच्चे बोल रहे सर पहले ना 2 अकाउंट पढ़ने पड़ते थे, डबल सिलेबस था, अब एक ही पढ़ना पड़ रहा है, अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे जाके हम क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे। आप इंटर में जाएंगे, वहां का इकोनॉमिक्स हटा दिया जाएगा, वो फाउंडेशन में डाल दिया जाएगा, अभी हम फाउंडेशन क्लियर करके वहां पहुंचेंगे, क्या होगा। तो बच्चों के मन में ये डर है। तो मैं बता दूं बच्चों, हर चीज सोची जाती है, करंट सिनेरियो को लेके बहुत सारे चेंजेस हैं। और बीच में मैं ये भी सोच रहा था आर्टिकलशिप 2 साल की नहीं करनी चाहिए थी, 3 साल की रखो, मैं तो बोल रहा था 4 साल की रखो, बट पॉइंट इज बात बिल्कुल सही है, 2 साल उन्होंने शिद्दत से दिए आपको, आप अपने पूरे बोध ग्रुप क्लियर करो। पहले क्या होता था, बच्चे जेडी सर ने सही बोला था कि बच्चे का आधा ध्यान रहता है कि ग्रुप 2 क्लियर करने में चाहो, आधा ध्यान रहता है आर्टिकलशिप में, और आधा ध्यान तो गर्लफ्रेंड पे रहता है। मतलब उधर ही पूरा ध्यान रहता है। पॉइंट इज उसका ध्यान कहीं पर पूरा फोकस नहीं रहता है। अब आर्टिकलशिप वो शिद्दत से करेगा, और जो बॉस रहेगा, जिसका प्रिंसिपल रहेगा, वो भी उससे काम करवाना चाहेगा 2 साल में, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। 3 साल का काम लगभग 2 साल में करवाना, या 2.5 साल का काम जो 2 साल में करवाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट वही बोल रहे थे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मुझे लगता है कि अपडेशन तो जरूरी है। आप जो अब तक इंटर में पढ़ा रहे थे अब वो फाउंडेशन में आ जाएगा, आपकी जिंदगी सेट है। नहीं अगर आप देखो, मतलब जितना भी जो है, मतलब जो जितना बाहर दिख रहा है उससे जो पता चल रहा है अभी तक, तो ही सब्जेक्ट में इन्होंने सिलेबस एक्चुअली में मतलब बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया है। वो ना तो आपका सब्जेक्ट है, ना मेरा सब्जेक्ट है, वो आदित्य सर का और उधर नकुल सर का था, क्योंकि उनके में पूरा मतलब उन्होंने पहली बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि 12वीं की इको को अहमियत दी है उन्होंने। जो उन्होंने और आईडीज में घुसड़ा है ना, इट इज गुड, आई पर्सनली फील इट इज गुड। अब बच्चा ना 12वीं की पढ़ाई को और ज्यादा सीरियसली लेंगे, सही बात है। क्योंकि 11वीं तो ये लेते नहीं आवे भी सीरियसली, टाइम पास में इनका निकल जाता है, फिर माइक्रो रोल आता है बाद में। अब कम से कम मैक्रो पढ़ के जाएंगे तो कुछ तो पहले से रहेगा दिमाग में। आई एग्री सर, आई एग्री, सिलेबस बहुत अपडेटेड रहने वाला है। और मुझे याद है आज से 2 या 2.5 साल पहले, मैं 1 सेकंड में दूसरे डिवाइस पे ज्वाइन करता हूँ। शांत सर 2 डिवाइस है, क्या मतलब अपनी जिंदगी का बताओ मेरे को।
मोबाइल स्टार्ट नहीं हो रहा, बस लैपटॉप मतलब बंद हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा मीटिंग। मैं कुछ अच्छा बोल रहा था, भूल गया। अरे सर फिर से ट्राई करता, फिर से क्या बोल रहे थे ये भूल गए। जेडी सर सब बुला देते हैं मॉल में। आपका सिलेबस काफी फिनिश किया है, मैक्रो लाया है, उसके बाद आप कुछ बोल रहे थे। वही है सर, काफी वेलकमिंग चीज है। हाँ, 3 साल पहले जो हमारे आईसीए के प्रेसिडेंट थे उनकी स्पीच सुन रहा था, काफी बड़ा समिट था। मुझे याद है अनअकैडमी ने भी उसको लाइव स्ट्रीम किया था उस टाइम पे, काफी बड़ा इवेंट था, 2.5 या 3 साल पहले, मुझे याद आ रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि सीए जो काम 10 साल पहले करते थे वर्सेस आज कर रहे, तो बहुत डिफरेंस है, और आने वाले 10 साल बाद जो काम करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो हमेशा रिफॉर्म आते रहना चाहिए, हर 5 साल में तो चीजें बदलती रहनी चाहिए। तो देखते हैं क्या नया लेकर आते हैं। काफी चीजें तो सर ऑब्सोलीट है। मैं अकाउंट्स के टीचर से बात करता हूँ तो मुझे बोलते हैं एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, मुझे एग्जैक्टली आती है, हायर परचेज है कि कौन सा बोले रियल लाइफ में ज्यादा यूजफुल है, मुझे पता नहीं शायद। आई थिंक ऐसे हायर परचेज था। हाँ, तो वाला उनमें तो डिलीट हो गया है। हाँ, वो बोलते कि रियल लाइफ में हमने देखा ही नहीं, यूज होते भी देख नहीं रहे। तो ऐसी रिडंडेंट चीजें बता रहे हैं और मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, हमारे करंट प्रेसिडेंट जो हैं आईसीआई के, वो भी बहुत रिफॉर्म, बहुत चेंजेस, मतलब वो लगे में पूरे मिशन में कि भैया चेंज तो नहीं हुआ। हाय किशन सर। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू? सर आप अपने व्यूज दीजिए सर सिलेबस के बारे में, आप भी अपने व्यूज दो सर, आप बताओ सर। सर इम्प्रूवमेंट तो है ही, बाकी एक बार सर डिटेल पहले स्टडी हो जाए। बट आई बिलीव सर 8 सब्जेक्ट पहले बहुत ज्यादा हो गया था, इंटर में तो सर आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है, जो हुआ है सो सही हुआ है। सब्जेक्ट कम रहेंगे, ज्यादा टारगेटेड रहेंगे, दैट विल मेक मोर सेंस। राइट। बाकी सब देखिए, मेरे सब्जेक्ट में बहुत चेंज होगा नहीं, टैक्स पहले बड़ा था, अभी भी बड़ा है। हाँ, EIS चला गया, विच इज फाइन, वो किसी और फॉर्म में रहेगा। और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी लेकर आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बहुत लेकर आ रहे हैं। सेल्फ सर जरूरी भी है सर। आर्टिकलशिप में सर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मीडियोकर सिटी में, इवन दिल्ली जैसे शहर में, अगर सीए तो सर 3 साल क्या किया भाई ने, प्रिंटिंग करी। तो उसके लिए तो जरूरी है सर कि मतलब जरूरी है कि इंस्टीट्यूट ही एक सेशन ले ले, कैसे रिटर्न वगैरह फाइल करते, तो सब पता होना चाहिए। सारे फॉर्म में नहीं मिलता है सर। तो ट्रेनिंग की क्वालिटी से पहले भी बहुत बेकार थी, अभी भी कुछ सुधरी नहीं है। तो जो अच्छे फॉर्म से वहां पे अच्छा है, छोटे फॉर्म में तो भी दिक्कत है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। हाँ, एटलीस्ट को भी ये रहेगा ना कि मेरी टेस्ट होने वाली है प्रैक्टिकल, तो चलो मैं 2 साल अच्छे से काम कर लूँ, उसके अंदर भी एक डर रहेगा और सीखने की इच्छा रहेगी हर चीज की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस सर बच्चों के अंदर भी एक्साइटमेंट है, हमारे अंदर भी है, सिलेबस आ रहा है, मतलब कल ही एग्जाम खत्म हुई फाउंडेशन की, वो एक अलग चीज थी, आज एक नई चीज, मतलब बहुत अच्छा एक से निकले दूसरे में आ गए। हाँ, एक से निकले, एक चल रहा है दिसंबर नवंबर का और एक आने वाला है उसकी भी तैयारी, मतलब 3 जगह पाव थे कल तक तो हमारे। सही बात। और ये जो नया कोर्स आया है, तो ये नया कोर्स की आज आपको एप्लीकेबिलिटी भी क्लियर कर दिया है उन्होंने, एटलीस्ट एप्लीकेबिलिटी आपको बता दी कि 1 तारीख के बाद से एप्लीकेबल है। तो अब आप अपनी डिसीजंस ले सकते हो। सिंस मेरे सामने आप लोग दोनों इंटरमीडिएट पे अनअकैडमी में पढ़ाते हो, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग दोनों से ही। देखिए सर, मतलब एक नॉर्मल, मैं उसकी जैसे चैट देख रहा था तो इंटर के बच्चों का भी ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने मेरे से भी पूछा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, जैसे मान लीजिए अगर मैं नवंबर 23 में प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरी जैसी अभी प्रिपरेशन है, मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप हो पाएगा, मैं दोनों ग्रुप नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? तो क्या मैं एक ग्रुप अभी दूं या ये पूरा अटेम्प्ट स्किप करके नए में पोर्ट करके May 24 में दोनों ग्रुप दूं साथ, विच वुड बी मोर बेनिफिशियल? सर देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि सर आप म्यूट हो। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। तो मैं तो सर हमेशा ये मानता हूँ कि अगर किसी ने अटेम्प्ट मिस किया तो अटेम्प्ट तो मिस करने का तो सेंस नहीं बनता है। अगर कोई नवंबर 23 में दे रहा है, आई एम श्योर उसका फायदा, अगर मानिए ग्रुप 1 भी क्लियर हो गया तो उसको इवन न्यू कोर्स में
बहुत सारा माफी मिल जाएगा, कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोन नहीं देना पड़ेगा। तो एडवांटेज तो है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट स्किप करने की सोच रहा है, मैं एकदम ब्लंटली बोलता हूं सर, वो एक एस्केप रूट तलाश रहा है कि भैया 6 महीने के लिए एफर्ट मेरा डिले हो जाए। That's it. बहुत सारे बच्चे इस तरह देखे हैं कि सर इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार रैंक लेकर आएंगे, या एक ही ग्रुप ही पास कर जाओ यार, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि एक अटेम्प्ट मिस करना। वो सर बहाना है सर, मतलब अटेम्प्ट तो मिस नहीं करना चाहिए बाय एनी हो, कोई भी रीजन हो, इवन अगर प्रिपरेशन कम भी है तो वो भी नहीं मिस करना चाहिए। तो अभी तो फिर भी बहुत समय है, अटेम्प्ट तो पक्का देना चाहिए जैसा भी है। आधा बर्डन तब जाता है, मैं सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, शांत सर आप भी जानते हैं, वहां पे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इमीडिएटली 6 महीने में आप एक ग्रुप निकाल सकते हैं। तो मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं रैंक का क्या, ठीक है, वो बोलते हैं रैंक आएंगे 50 बच्चों के, हम बैठे हैं 50,000 बच्चों के बीच में, तो आधा बर्डन तो उठा दे और उसके बाद शांति से पढ़ेंगे बाकी तो। और ट्रस्ट में इतनी सही चीज सीएमए के अंदर मैं अप्रिशिएट करता हूँ वहां पर एक चीज कि अगले 6 महीने में जो अटेम्प्ट आ रहा है, आपको 9 महीने का कोई कूलिंग पीरियड नहीं है, 6 महीने में आप एक ग्रुप दे दो। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको यही सोचना है, आने वाला अटेम्प्ट आपके लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इस अटेम्प्ट को स्किप करोगे तो कोई बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपका अगला अटेम्प्ट बाद में आएगा तब डबल बर्डन लेकर जाओगे। ये तो ऐसे ही है कि भैया आप 2 बार चक्कर मारने वाले हो, आधा बर्डन उठा के अभी रख तो आधा अगली बार ले जाओ, अभी खाली आज जा रहे हो, अगली बार गधे की तरह डबल ग्रुप लेकर घूम रहे हो, उसमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक तो मेरा सवाल है, शायद मुझे क्लैरिटी नहीं है पर बाकी टीचर आपको या किशन सर को हो सकती है। बच्चे ने ग्रुप 1 दे दिया, उसके अंदर उसका लेट्स से कॉस्टिंग क्लियर हो गया, अब इसको ग्रुप 2 देना है, और अभी जहां तक न्यूज मुझे पता है ग्रुप 2 में कॉस्टिंग ही है, वो बोल रहे हैं कुछ लोग टैक्स भी जा सकते हैं, 93% कॉस्टिंग है। अब ग्रुप 2 की इसको एग्जाम देनी है, ग्रुप 2 में गया कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में से एग्जाम्पशन मिलेगा किशन सर, शांत सर, या क्या? ये चीज की क्लैरिटी मुझे नहीं है सर। मेरे को न्यू कोर्स के ऑल अराउंड जितनी चीजें मतलब आप बीओएस से हटा के देख सकते हो, वो सारी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है। सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो मुद्दा, मतलब जो भी वीडियो बनाओ उसके कमेंट सेक्शन में 12 रखा, 1600 कमेंट में 800 कमेंट इसी चीज के थे, ठीक है। वीडियो पे एक वीडियो की थी, 1600 कमेंट पे 800 कमेंट ये थे, मैंने गिने थे लिटरली, क्योंकि मैंने रिप्लाई किया था कि सर अगर मेरा इंटर में ग्रुप 1 क्लियर हो जाता तो क्या मेरे को कॉस्टिंग का पेपर वापस रिपीट करना पड़ेगा? और सेम क्वेश्चन फाइनल के भी थे, मैंने जो सबको बोला सेम चीज बोलूंगा। इसके ऊपर बीओएस के प्रोस्पेक्टस जो आएंगे उस पर क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने एक पेपर एक बार क्लियर कर लिया है, आईसीआई आपसे दोबारा वो नहीं दिलवाएगा भाई। वो पास मतलब आपके ऊपर ऐसा जोर जबरदस्ती करने नहीं बैठते हैं, परेशान करने नहीं बैठते हैं, एग्जाम्पशन की तरह से दे देंगे वो कि भैया क्लेम कुछ ना कुछ आपके लिए इंतजाम किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कॉस्टिंग दे दिया तो दोबारा देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना तो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं, बाकी जो क्लैरिटी आएगी जरूर। तो बच्चों को तो नवंबर में तो ग्रुप 1 दे ही देना चाहिए, जो भी ग्रुप है दे ही देना चाहिए, एट एनी कॉस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ऑप्शन आ गया तो 2 ही सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे और शांति से कर पाएगा इंसान, जीवन जी लेगा। बस एग्जाम देने से लेकर अगली एग्जाम तक के बीच में ही तो जीवन मिलता है बच्चों को, सॉरी अगले कोर्स समझो फाउंडेशन के एग्जाम देने से लेकर इंटर के एडमिशन तक ही तो जीवन जीने के लिए मिलता है, उसके बाद कहाँ जीवन जिएंगे। और वो भी उसमें बच्चे अभी कल खत्म किए फाउंडेशन का, आज ही से मैसेज, सर इंटर का क्या प्लान है, इंटर क्या कर। अरे भाई पहले एक हफ्ता छुट्टी एंजॉय कर लो। और एक बच्चे को तो मैंने लिटरली ये बोला, मैंने बोला भाई तुम नहीं एंजॉय कर रहे हो, कम से कम हमें तो 2 दिन साथ ले लेना। तो उसके बाद अभी वो खत्म हुआ, 1 जुलाई आ गया भाई, 3 तारीख इधर बैठे, एक दिन तो हमें भी अपने लिए मिल जाने दो। मतलब वो बेचारे घर से आदित्य सर निकले तो उनको वापस आना पड़ा, जेडी तक निकले तो उनको वापस आना पड़ा, हम निकल ही नहीं पाए तो वापस कैसे आएंगे? एक दिन तो हमें जीने दो, कुछ ना जैसे ही कुछ पता चलेगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और देखो अभी तो चल ही रहा है इवेंट, हालांकि अभी इवेंट में आपको स्क्रीनिंग वगैरह सब चल रही है। अभी यहाँ पर डिटेल्ड पूरा ये डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि क्या कोर्स में आने वाला है क्या नहीं। मीटिंग 2 पार्ट में होगी और अभी मीटिंग भाई लंबी चलने वाली है इवेंट तो आज, क्योंकि ये शुरू एक पीरियड था लेट में। राइट, बच्चों का ये भी कहना है कि भैया फटाफट स्किप करो। बच्चों आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए नहीं बैठे हैं, इनके बहुत बड़े प्रोस्पेक्टस है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है आज हमारी इंस्टीट्यूट, पूरे देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी अगर देखी जाए तो यहाँ भी थोड़े
कि ऐसा सिलेबस लेकर आ गए, खोल के तुमको बता दिए, 4 क्वेरी करके प्रेसिडेंट साहिबा आएंगे हमारी, बोलोगे निकलो कर। बच्चों के कमेंट देख रहा था, बोले जल्दी करो, बोल रहा जल्दी करो, प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं जल्दी करो भैया जल्दी। इसलिए उन्होंने सर शांति से शिद्दत से बच्चों की एग्जाम होने दी। नहीं तो अगर मान लो एक पेपर बाकी होता तो इनकी जान आधी यहाँ अटकी होती और आधी कहीं और होती। और आपको तो पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हर थोड़ी देर में आपको नई लोकेशन दिखा रहे हैं, कभी सामान, कभी कपड़े, ठीक है, कभी मॉल, मतलब ये एक अलग तरह का व्यूइंग दिखाया जा रहा है आपको। ऑनलाइन की दुनिया में आपको ऑफलाइन की प्रेजेंस दिखाई जा रही है। इट इज अमेजिंग, सैल्यूट टू यू। देखो मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे टेंशन में बैठे, मतलब वो सब एक्साइटमेंट में बैठे, तो एक्साइटमेंट कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़ा उनका मन बहकाऊं। ये करने के लिए बहुत बहकाऊं नहीं मैं। एक काम करो, आप ना घर पे आ जाओ और यहाँ पे टीचिंग देखे ना वोकैबुलरी की मेरे को, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश भी। मैं जानबूझ के गलती करता हूँ, आप समझते नहीं हो बच्चे। यही चाहता हूँ मैं, आप गलती पकड़ो। तो दीज आर द डू एंड डोंट्स। लेकिन बच्चे आजकल बच्चे सीरियसली बोलना चालू हो गए कि जतिन सर ने अगर कुछ गलत नहीं बोला जानबूझ के तो उसका दिन अटक जाए। मतलब अगर एग्जैक्टली आप एक सेशन VCR कर लो, मतलब बच्चे मिलियंस की भी बुला देंगे। तन्मय भट्ट से रोस्ट करवाएंगे आपका। बात तो सही है यार, वो मैं कहता हूँ इंग्लिश कर लिया तो रोस्ट हो जाऊंगा। बस आंसर समझ। देखो इसीलिए देखो मैं तन्मय भट्ट को कंटेंट नहीं देना चाहता, वो व्यूज कमा लेगा फुकट, मेरे चक्कर में सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, ठीक है। नहीं यार बट ठीक है। आंसर यार पर कोर्स कब आएगा यार? देखो द नेशन वॉन्ट्स टू। शांत सर आप म्यूट हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो आदमी बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई वीडियो ये अलग अलग कैमरा भी होने सर, ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे का मन बहता है। बिल्कुल नहीं सही है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन बस वो क्या है ना, बच्चों को कंट्रोल हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट है कि जल्द से जल्द सिलेबस दिखा। मैं 4 बार तो अपने ग्रुप में डाल चुका हूँ यार कि सिलेबस कब आएगा। और तो देखा जाएगा आना बदलता नहीं है। मैथ्स में क्या चेंज होगा, कॉस्ट में क्या चेंज होगा, इतना कुछ चेंज होता नहीं है। बट फिर देखो ज्यादा चेंजेस नहीं होता। जैसे आप देखो चैप्टर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऑडी जाके रेंज रोवर आगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस दिल को दिलासा। नहीं बहुत फर्क पड़ता है। किसी बात कर रहे हैं यार ऐसे मुंह में, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा सर। इज्जत वो दोहरा हो जाएगा भाई। रेंज रोवर इसी साल ले लेना, अगला वीडियो शूट वहीं से करना। मेरी इच्छा बहुत है, देखते हैं कुछ चीजें रिन्यू हो जाती है तो समझे। सर मुझे लगता है कि सिलेबस के बारे में अभी तक ज्यादा डिस्कशन तो इन्होंने चालू किया नहीं है, पर ये नहीं है स्ट्रीमिंग चालू कर देनी चाहिए हमें। मतलब हम म्यूट हो जाते हैं, मतलब हम म्यूट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सही है, सुनने देते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद करिकुलम का आ सकता है। डन। तो एक बार आता है तो एक बार अपन फिर से कनेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, चलो डन।
Of our profession. Thank you. Thank you very much. So it's Dr. MCA Day. That's why health is well. Devarshi sir, what do you expect from the play on first council meeting? Your expectations? I expect to see, GP Kapadia, about whom I read the history of accounting, quoted him in the when I wrote the president's speech. I hope all those quotes comes here. See, when I see the play, Mr. Basu, Mr. Shastri is a very important character for me because he was the one who got Garuda the eagle. He talked to Aravinda ji and got Garuda the eagle. So I hope to see Mr. Shastri, somebody playing Mr. Shastri here. Right, so looking forward to the play. Absolutely. I did have a chance to see some of them doing the makeup, and they almost reminded us it's 1949. So I did meet CS Shastri. Aniket sir, your expectation? This is fantastic. A play that dates back to 1949. I think, first of all, once again, a very happy CA Day and wonderful to see all of you. I think the video itself gave me goosebumps. Took us back to 1949 and in fact even to the accountancy board. And what is going to be expected more than what is expected from the play, I think it's all of us sitting here as council members, it's going to be more onerous for us to realize that when the play which was being done today is the first council meeting, we probably might have 25, 50 years later, another council or another professions or another regional council which may want to reenact our own council. And therefore, I think it makes our tasks, and especially mine as the president of this institute, to chair a council which not only decides about today, the requirement of membership and students, but also envisions the future. And I would keenly be looking for is how these gentlemen, 14 of them, who did not even have an office and asked the government for temporary infrastructure and then eventually bought a piece of land in Delhi. And today we have 100 own buildings of the institute. I think this is all thanks to these legendary people who have contributed in the creation of the profession. And let us hope, as it has been said, that the 25 years from now, not only is the institute the largest accounting body, but a professional body and a profession which is looked up to across the globe. So looking forward to it. Thank you very much. Which character you want to see other than the president? I personally would be also very keen to see the secretary of the institute who happened to be from the ministry. Yes. And then was deputed and taken as a secretary of the institute, and the role of the secretary of the council has evolved so much over these years, and today he is designated as the CEO. And I think I must acknowledge as the president that today, though the councils, the regional councils, the branches, the membership contributes to where we are, one very important pillar is the employees of the institute who have also taken us where we are. So looking forward to hearing and seeing that. Absolutely. Thank you very much. I think we'll also be very keen to see the first president's character, CA GP Kapadia. And this morning, Honorable President Aniket Talati ji did unfurl the flag at the ICAI Bhavan headquarters and also garlanded the bust of CA Kapadia. Well, right now, let me introduce to you someone really special. Have you seen Dilwale Dulhaniya Le Jayenge? Just raise hand. Have you seen Dilwale Dulhaniya? Have you seen Kuch Kuch Hota Hai? Have you seen हम आपके हैं कौन? अगर फिल्मों में रुचि नहीं है तो चलिए टेलीविजन को ऑप्शन देता हूं. अपू क्या उल्टन पलटन ये सीरियल देखते हैं आप? हम सफर देखा है आपने? हमराई देखा है? चलिए टेलीविजन में भी रुचि नहीं रखते तो नाटक में रुचि रखते होंगे. क्या आपने फिल्मों में, टीवी में, थिएटर में हिमानी शिवपुरी जी को देखा है? तो तालियों से अभिनंदन करिए हिमानी जी का. Himani ji, please come on stage. Here we are.
Amidst a round of applause, Himani Shivpuri, the actor who has entertained us for decades through her films, television, and theatre. Hello, good evening. Namaskar to all of you. Yes. Very happy that you are here as part of CA Day celebrations. I'm very happy to be part of here at this historic occasion of 75 years of the Institute of Chartered Accountants of India. I'm very happy to be here and I'm very happy to welcome all of you. आप अच्छी एक्टर हैं, संगीत नाटक पुरस्कार भी आपको मिला है संगीत नाटक अकादमी का। फाइनेंस में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी रुचि है हिमानी जी? मैं पैसे के मामले में बिल्कुल जीरो अंडा हूँ। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम परेशान हो जाता है मुझसे, बिकॉज जहाँ तक पैसा है मतलब I like to earn money, but I don't know how to manage it. I'm sorry. काफी सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, skilled people like you, but I'm sorry, I am not born with the aptitude to manage money like all of you present here. That's a talent. Would you say that new generation actors should embrace financial literacy? Of course, because I think all these younger generation of actors have become so smart. पहले आपने सुना होगा कहानियां, पता नहीं सुना है कि नहीं, जो लेजेंडरी एक्टर होते थे वो बहुत अच्छे जो डांसर थे, जिनका स्टेप शाहरुख खान से लेके मिस्टर बच्चन ने कॉपी किया है, वो है ना क्या है गाना कि सूरत की भगवान दादा, इतना उन्होंने पैसा कमाया बट मरते वक्त ही डाइड ऑफ पेन्यूरी। और ये अपने प्रदीप कुमार जी एक टाइम पर नंबर 1 हीरो हुआ करते थे, ताजमहल और बहुत सारी फिल्में उन्होंने करी, बैजू बावरा, लेकिन बाद में उनकी ऐसी हालत हो गई थी, वन ऑफ दी मतलब नसीर भाई रिकाउंट करते हैं कि यू नो ही डिडंट हैव द मनी, वो कुछ ऐसे स्मॉल से रोल करने के लिए आए थे, बिकॉज ही हैड टू डू द रोल टू सर्वाइव, बिकॉज पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता था पहले के एक्टर्स को। तो उनको टैक्सी का, उनके पास टैक्सी का, बॉम्बे में ज्यादातर टैक्सियां चलती थी, रिक्शा तो अब वो भी बांद्रा तक ही हैं, तो उनके पास टैक्सी फेयर के पैसे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हो जाते थे एक्टर, क्योंकि उनके पास जब पैसा आता था तो यू नो एक्टर अभी इमोशनल फूल्स कह सकते हैं, तो खूब उड़ाते थे पैसा, गाड़ियां खरीद ली और बाकी पार्टीज दे रहे हैं, और जब उसको मैनेज करना नहीं आता था। लेकिन आजकल के एक्टर्स थैंकफुली हैव बिकम वेरी स्मार्ट, दे हैव started owning their own production houses and they are really ruling it now. जी, ये बहुत अच्छा संदेश आपने सीए डे पर दिया है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट दूसरा, और उम्मीद है कि नई जनरेशन बचत भी करेगी, निवेश भी करेगी और पैसा ग्रो भी करेगी। इससे पहले कि आप प्ले इंट्रोड्यूस करें, कोई डायलॉग बोल के दिखाते। मुझे तो वो डीडीएलजे वाला सीन था ना आपका साड़ी वाला, आपने शाहरुख का जिक्र किया, वो बड़ा पसंद है। शाहरुख चाहिए उस सीन को करने के लिए, समझे? शाहरुख को ले आओ। No, please sit there. मैं क्या करूंगी? नहीं आप करेंगी तो वॉलंटियर्स रहने दीजिए। नहीं, वॉलंटियर्स रहने दीजिए आप। नहीं, आई एम, एक्सक्यूज मी सर, अब मैं आपको एक अपना जो आजकल मेरा एक सीरियल चल रहा है उल्टन पलटन, हप्पू की उल्टन पलटन, उसका you're very welcome. I hope Shahrukh doesn't take offense. Thank you very much. Thank you. टोन के लाइए जी, उल्टन पलटन का सुना। उल्टन पलटन का सुना देती हूँ। देखो भैया, मैं आई हूँ मैं सिर्फ ये जो प्ले होने वालों है, नाटक होने वालों है, बा को इंट्रोडक्शन करवाने, बा के भी कम पैसे मिल रहे हैं, और अगर डायलॉग की एक्टिंग करवानी है तो पैसा बढ़वाओ, नहीं तो तुम्हारी नींबू निचोड़ देंगे। Himani Shivpuri will now introduce this play. Thank you very much. Here, you can take this mic. I think this mic works. Thank you so much. Thank you, ma'am. Once again, I welcome you. अब मेरे को इंट्रोडक्शन अपना देने की जरूरत नहीं है, भाई साहब ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं हिमानी शिवपुरी हूँ। मैं आपको on behalf of myself and the National School of Drama, I welcome you on this momentous occasion. Thank you.
Today we are gathered here to witness the reenactment of the inaugural meeting of the Council of Institute of Chartered Accountants of India, held on August 15th and 16th, 1949. In this collaboration between ICAI and NST, we are honored to have been entrusted with the task to bring to life the very essence of the first council meeting. With our troupe of talented actors and skilled technicians, we endeavor to create an unforgettable experience. Soon after the ICAI was formed on the 1st of July 1949, its governing council held its first meeting on the 15th and 16th August 1949 with 20 members. Out of these 20, 15 were elected among the chartered accountants and 5 were government nominees. The said meeting was also attended by 3 officers from the Government of India. At this very first meeting, many crucial decisions were taken, which later on became the basis on which the institution and the profession of chartered accountants was built. Therefore, this meeting assumes a great significance, not only for the members who are governing the profession today at central, regional and branch level, but it is equally important for the general members and for the students to know how the seed was planted by these visionaries, which today has resulted in ICAI becoming truly global, and its members have come to be known as partners in nation building. I think you all deserve a clap for yourself at least. On the morning of 15th August 1949, the first to arrive to the council meeting were 3 government officials. Mr. S. Ranganathan, Joint Secretary, Ministry of Commerce, Mr. K. Srinivasan, Under Secretary, Ministry of Commerce, Mr. S. Venkatraman, Officer on Special Duty, Ministry of Commerce. They came early because they had to do the last minute checkups before the meeting started. Soon after their arrival, CA G.P. Kapadia, CA M.S. Krishnaswamy, CA K.N. Gudgutia, and CA N.M. Raji entered the meeting room. They were then joined by CA S.B.L. Vaish, CA S.T. Nargorwala, and CA B.D. Burdi. Next to join was CA S. Suryanarayan Iyer, CA R.N. Rajam Iyer, CA C.S. Shastri, and CA S.N. Banerjee, followed by senior chartered accountants like CA G. Boshu, CA N.M. Shah, CA N.R. Modi, and CA N.K. Dev. Next came CA G.M. Bahgate, CA S. Ghosh, and CA P.R. Mehra. And finally, Mr. C.C. Desai, ICS, and the renowned historian Dr. Tarachand entered the meeting room. All right, gentlemen, please settle down. And as soon as Mr. Desai took his chair, he brought the first council meeting to order. Good morning, gentlemen. Good morning, sir. I welcome all members of the council to this historic first meeting of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India. As you all know, I have been appointed by the Government of India under the proviso to Section 12 of the Chartered Accountants Act
1949 to discharge the responsibilities of the president till such time as the president is elected by this august body. Let me take up agenda items number 2 and 5, namely election of the president and vice president. May I have the nominations, please? Sir, I propose the name of CA J.P. Kapadia for presidentship. Okay. Sir, I second the proposal. Sir, I propose the name of CA G. Basu for vice presidentship. Very good, very good. Sir, I second the proposal. Very good, very good, very good. Any other nominations? No, I think enough. All right. In the absence of any other nomination, I declare CA Kapadia as the president and CA Basu as the vice president. I, on behalf of Government of India, members of the Council, and on my personal behalf, would like to extend hearty congratulations to CA Kapadia and CA Basu on their election as the President and Vice President of the first Council of the Institute of Chartered Accountants of India. As was mentioned by the Honorable Commerce Minister earlier today, this is to the profession and commanded the unanimous support of the members of the Council, as well as the unanimous support of the profession outside. I do not know CA Kapadia much, but when I took over as the Commerce Secretary, then in his capacity as the expert, as a member of the expert committee, he came in closer contact with me. I have no doubt that CA Kapadia's devotion to the profession is as profound as is expected of the first president of the council. I also have no doubt that he would strain every nerve and make every possible sacrifice to attend to the work of the council, to raise its dignity and to advance its cause to the best of his ability. You have a worthy president in him. Great. My knowledge of CA Basu is a little less, but from what I saw of him on the accountancy board, I have no doubt that the two of them will form a good team and raise the dignity, status, and standard of the institute. I now request CA Kapadia and CA Basu to take the chair. So glad, so glad. Thank you. Thank you. Congratulations. Come. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations, Mr. President. Thank you. Congratulations, Mr. Vice President. Thank you, Mr. Desai. Thank you, gentlemen. Before I take up the agenda items, I must acknowledge the services that have been rendered to the profession and particularly to the Indian Accountancy Board by Mr. Desai. Mr. Desai played a crucial part in the expert committee, and he took a lot of interest and gave a great deal of help in piloting the bill through the Assembly. His energetic approach to all the matters has gained the autonomy for the profession at a very early date, and we are very grateful for this. Mr. Ranganathan, Joint Secretary, Ministry of Commerce, has also rendered sterling help for us in tackling the various difficulties that came up before the passage of the bill, and he did this in a very tactful manner. Thank you. D.A. Krishna Swami took a very active part in all the stages that we had to pass through before we got autonomy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lastly, I thank all the members of the Council for the confidence reposed in me, and I hope that I shall prove worthy of it. Thank you. I will now take up the items on the agenda. Let us go to item number 6, which is location of the office of the Council. I feel that during the initial stages, we should have the location of office at New Delhi, because in every stage of our work,
We will be dependent upon the record of the government, the past basic record. And as you know, the government will never part with its records. So it is true that it is difficult to find accommodation in New Delhi. So we may need to look at an alternative location at an early stage. However, if the views of the members of the council are that we need to have the location in New Delhi of the headquarters, at least at the early stages, then we can request the government to provide us with accommodation. Well, on behalf of the government, I can say that till such time as the council can decide on a location or have their own building, it should be possible for the government to provide temporary accommodation. Very good, very good. Provided your demand is not unduly high. And at a later date, we can also help to find a plot of land in Delhi if necessary, but on payment. Mr. President, let the headquarters be in Delhi for 1 year and the position can be reviewed later. Yes, very good, very good. Yeah, thank you, gentlemen. Let us now go on to agenda item number 8, which is opening of the bank account. Is it necessary to pass such a formal resolution to this effect? Especially in view of the fact that the first secretary is going to be nominated by the government? And in any case, if you are passing a resolution to this effect, we must fix a limit beyond which the secretary shall not sign the checks. And this has to be done during the tenure of the secretary being nominated by the government, so that the same trend can be followed subsequently when this council appoints a new secretary. When the council is appointing an officer on such a high salary as secretary, we should expect responsible work from him. We should have confidence in our own secretary, and nothing, I repeat, nothing should be done to damage that confidence. After all, it is not difficult for anyone to circumvent the limit, as more checks can be signed of sums within that limit. Exactly. Right? Yeah. I think we have general agreement with CA Pesh, and so the resolution is passed as appended in the agenda. Thank you. We can now move on and we take up item number 9, which is approval of the temporary common seal. Now, gentlemen, as you know, the certificate of practice needs to be issued within 1 month from the date of the first meeting. The permanent seal can be looked at in due course. However, since the certificate needs to be issued, I suggest we go with the specimen seal for the moment. Mr. President, sir, are we going to issue 2 kinds of certificates? One for fellow and another for associate? Or are we going to issue just one certificate? Mr. President, if I may. Arrangements have been made to issue certificates of both the kinds. Okay. We expect the council will formally approve of the action later. Personally, I have a doubt on the list of persons prepared by you. The list has to be properly checked. Doubts, if any, has to be clear. And in case of any discrepancy, it should be brought to the notice of the candidate. And information should be sought without any kind of disciplinary action. And subsequently, the certificate should be issued. Well, C.A. Krishna Swami, the consensus appears to be that certificates of practice as associate and fellow should be issued to all those entitled to it based on the records of the government. Now, in doubtful cases, the attention of the person concerned should be drawn to the relevant provisions of the Act, and they should be asked to obtain alternative employment within a specified period. In cases where, according to present information, the member concerned has full-time employment with another person or firm and does not actually have their own practice, then no certificate of practice will be issued to them. They should be informed that they should give up such employment or obtain the permission of the council before a certificate of practice can be issued to them. Very clear. Now, gentlemen, we've had a long day of discussions, and with this, I adjourn the first day of our meeting. We will resume our deliberations at 10 a.m. tomorrow. And let us not forget that today is the 15th of August. Hence, we
we have the freedom to lead. Thank you. Well, good morning, gentlemen. Good morning. Welcome back. Thank you. On this second day of our first meeting, I would like to start with agenda item number 7A, which is appointment of the secretary. Now, till now, we have not been able to get a definite indication from the government as to their choice in the matter. However, I would like to share some information. Mr. K. Srinivasan, Under Secretary, Ministry of Commerce, has been helping all along in the drafting of the bill as well as in the expert committee stages. And his help has really been very valuable indeed. If the government thought fit, I think they might lend us the services of Mr. Srinivasan so that he could become the first secretary of the council. I would like to get the views of the council first, but I would also say that the benefits to us are that there would be continuity of policy and better health. So first the members' views, and then I would ask Mr. Desai to give his views. All of us agree that Mr. K. Srinivasan is the best choice. If government can lend his services, at least for some time. Well, Mr. Srinivasan is certainly the most competent person. Therefore, from the side of the government also, the proposal is acceptable. Very good. But the question is of sparing his services. However, if it's only for a period of 1 year, I think it should be possible. I think an assistant secretary should also be appointed, who can be trained by Mr. Srinivasan to be able to later take over his duties. Well, appointment of an assistant secretary can also be thought of. But I do not think that within a year's time, the assistant secretary will be in such a position as to assume charge as secretary. Possibly government may have to think in terms of appointing some other gentleman at that stage. Can the council select its own secretary and ask the government to approve it? Certainly, the selection is made by the council after advertisement. Government will have no objection in appointing him for a further period of 2 years. But I am just clear on the point that during the first 3 years, the secretary has to be appointed by the government. Well, the proposal to appoint Mr. K. Srinivasan as the first secretary is carried unanimously. Thank you, gentlemen. I would like now to take up part B of the same item number 7, which is appointment of staff. The first item is appointment of an assistant secretary. I must give some information here. Mr. Venkatraman, on special duty, Ministry of Commerce, has been working with us on the election and also the setting up of the institute. Now, if we would want his services, he is available. He is also having been worked with Mr. Srinivasan for some time, and therefore there's a benefit in that to us. So I think it would be a very good idea if we could appoint him as the assistant secretary of the council. I thought we were just considering as to what posts are to be filled, and not as to who the incumbents to the post should be. I think if suddenly names are sprung upon us like this, it would be a rather undesirable practice. I think we should have a committee set up to interview the candidates and choose the best man available. Mr. Srinivasan's case is entirely different. Each one of us knows what useful service he's rendered to us, and that without his help and support, it would have been practically impossible to draw up and formalize the Chartered Accountants Act. Gentlemen,
Quite apart from the question of appointing an assistant secretary, may I know whether the proposal placed in front of the council is for the minimum staff necessary, and who has drawn up this list? Well, the list was prepared by the government based on the experience of the working of the accountancy board and the work that will devolve on the council in view of the provisions in the act. In the opinion of the government, this is the minimum staff required to run the council. The staff is rather excessive. I also feel that the staff is rather excessive. I think. Mr. President, if I may. Actually, a bigger staff was employed there. But after the elections to the council was over, it was anticipated that the volume of work will be slightly less than what it had been in the past few months. Gentlemen, this is the government's expression of opinion. There's nothing to prevent the council after a little while to say that the staff is too high and the number will be reduced. Since the council is not going to make these posts on the permanent basis today, I think there's no difficulty in accepting it tentatively. And after 6 months, when the executive committee meets, they can review it and consider the position again. Well, I think the House agrees with Mr. Ranganathan's views unanimously. Thank you. Yes. I will now take up item number 11 of the agenda. That is, remuneration of the President, Vice President, and the members of the Council to be approved by the government. The word remuneration should be changed to allowances. Mr. Krishnaswamy, I do agree. However, since this matter is for decision by the government, I would like to ask Mr. Desai for his own views. Well, you may call it allowances instead of remuneration, but allowances should be those as are admissible to government officers. But whether they should be higher or lower is for the members to decide. Mr. President, if I may, please. So far as the government officers of grade 1 are concerned, the maximum rate of daily allowances admissible to them is ₹15 a day. As regards TA, they are allowed and entitled to 1 1/4 airfares if they travel by air and 1/2 rail fare if they travel by train. Let us accept the proposal. Let me now go on to item number 12, which is amendment to Regulation 28 of the Chartered Accountants Regulations 1949. Now let me read out the note given with the agenda papers. You have this in your folder. Representations have been made that the answer papers in the recent final RA examination were not properly valued. Since provision has been made in the regulations for re-examinations, it would be advisable to give effect to it retrospectively. The suggested amendment approved by government is attached. Mr. President, I'm not in favor of this amendment. Such a provision is not valid to the council. To my knowledge, the examiners have just done that job satisfactorily. That's all. Well, C. Krishnaswamy, while these rules are being drafted, a provision was made for the transition period. Several things which were not in the earlier rules were actually added in the new rules and in the Act. In fact, an advantageous position was created for those people taking the examination after the institute was set up. But I do feel it is wrong and unfair to exclude deserving candidates too. Now, I do not agree that there is something wrong. But if there is anything wrong and the examination valuation is incorrect, in that case, it will not be proper to exclude such cases just because the question was asked at the time of the setting up of the institute. That had the institute not been set up and the act not been passed, the government itself might have chosen to amend the rules. Yeah. Mr. Kapadia, the objective is to maintain a very high standard in the profession. And there should be no question of re-examination if the papers have been marked and passed. This should not go in at all. I agree with C.A. Basket on maintaining the high standards of the profession. However, I am not aware of Regulation 28.3 and I do oppose it in principle. But as long as the regulation stands, all those candidates who failed in the RA examination in May 1949 should be given the same rights of having their papers revalued. I agree with C.A. Basket. I also agree with C.A. Basket. I also agree with C.A. Basket.
Yeah. Well, actually, this amendment was contemplated by the government itself. But then we were told by the law department that now that the new act had come into force, it is for the new council to pass the appropriate amendment. Otherwise, we would have taken steps to carry out the amendment, considering the number of recent representations that we had received. Government has taken legal opinion on the legality, and according to that, it is within the competence of the council to pass this rule. Government is not proposing this amendment with a view to reducing the standard. Every person is liable to make a mistake, and because of the mistake of somebody, the student should not suffer unreasonably. The right to re-examine or revalue the paper is being asked not necessarily to reduce the standard. If, as a result of the re-examination, it is found that a man has failed, then he is a failure, and nothing further needs to be done. But such a right has also been conceded by the universities, and I do not see any reason why the institute should not follow suit. Yes. The council may consider the matter in the light of these explanations and give the candidates an opportunity of having their papers revalued without in any way affecting the standard of the examination. Of course, I agree with C.A. Badke that the standard of the profession should be maintained very high. Besides, sir, there can be a great difference between the judgment of one man and another. So I think the provision proposed is of utmost importance and very necessary. Absolutely. So I think do we have agreement on this point? Yes. Okay, well, I think the consensus appears to be that the amendment may be made subject to the modification that the time limit should be reduced to 1 month from the date of the exam of the meeting. The accountancy societies and the recognized institutions will be informed of this provision. Also, the proposal for deleting the existing rule should be brought up at the next meeting of the council, as a majority of the members are opposed to it. Okay. Now, let me go to item number 10, which is election to the standing committees. Claim of Madras in the matter of representation on committee should be considered. President has been elected from Bombay, Vice President from Bengal. Madras is sufficiently large region with a number of sufficient practitioners. Therefore, Madras should be given representation at least one member on each committee. Yes. Regional consideration should not influence members in selecting the best men to the various committees. Well said. Yes, well said. Elections to the council are held on regional basis, and regions are established. Having said that, there is no meaning in packing the committee with representative of one region to the exclusion of other constituencies which may remain unrepresented. I totally agree with my friends. We should not pack the committees with representatives from one constituency only. Correct. Correct. Gentlemen, if the council has to proceed in a level-headed manner to the benefit of the profession, then we should elect to our subcommittees the most competent and the most efficient people to be on the subcommittees, to the qualification of one another and to the experience of one another. This only should be the determining factor. Perfectly stated. Yeah, while it is not desirable to lay down such a convention by a sort of a formal resolution of the council, we should take care of the matter mentioned therein in the actual formation of the committees. Mr. President, I agree with C.A. Badke. Gentlemen, it may well happen that two members of the same constituency, maybe by reason of circumstances, are best fitted to sit on the committee, while others may not have the necessary time or the expert knowledge. I therefore suggest it should be left to the good sense of the electorate to follow the suggestion made by C.A. Krishnaswamy. Thank you. Thank you. Right, gentlemen. Let us now discuss amongst ourselves to see who should be elected to the standing committees.
Well, let me now announce the names of members elected to the various standing committees. Thank you, gentlemen, for the slips. Executive Committee, CA S. Suryanarayan Iyer. CA PR Mehra. CA SN Banerjee. Disciplinary Committee, CA GM Basgate. CA RN Rajam Iyer. CA SD Nargolwala, Government Nominee. Examination Committee, CA NM Shah. CA KN Gutgutia. And CA CS Sastri. Congratulations, gentlemen. I am happy that all elections have been unanimous. Now, Mr. Srinivasan has prepared a note, and I wanted the opinion of the House as to whether the matters should be discussed by the President, by the Executive Committee, or by the Council as a whole. Mr. Srinivasan. Thank you, Mr. President. The first item relates to the mode of payment to the Council. The government is not receiving any payments in cash. Therefore, the question before the Council is, should payments to the Council be made in cash, or should they only be made through checks and drafts? Well, I think the consensus is that all payments should be made only by checks, drafts, or postal orders, and that too in favor of the Secretary of the Institute. No cash payment whatsoever should be received. The second note is on whether the Council should issue certificates of practice as fellows straight away. Mr. President. Yes, please. The government has published a list of people who are eligible as they satisfied the conditions of admission as fellows, according to the information available with the government. It is very necessary to issue the checks within 1 month's time, else the time period allowed under the ordinance will lapse, and it will be very difficult to extend the period thereafter. I think we have clear consensus on this point. The consensus appears to be the certificates of practice should be issued to all associates and fellows who are entitled to it based upon the records with the government. In cases of any doubt, the person concerned should be referred to the relevant portions of the Act, and they should be asked to obtain the approval of the Council for taking up other employment within a specified period. In cases where, according to present information, the member concerned is either in the full-time employment of another person or in the full-time employment of another firm and has no independent practice. In that situation, no certificate of practice will be issued to him. He should be informed that he should give up such employment or obtain the approval of the Council for the certificate of practice to be issued to him. Mr. Kapadia, if during the hiatus it is found that someone is not entitled to a certificate, it is the articled clerk who will suffer. Mr. President, if I may. Sir, provision has been made in the regulations to consider individual cases, so that in case an error has been made by the Council in a hurry, it can be rectified without the articled clerks being made to suffer. Excellent. Thank you, Mr. Srinivasan. The third note is on approval of the budget estimates. Mr. Srinivasan. Thank you, sir. So we prepared the estimates for the remainder of the financial year ending 31st March 1950 on the basis that there will be a separate secretary and a separate assistant secretary. You all have the agenda papers in your folders and the figures are there. I shall repeat it for the benefit of the minutes. The
Figures for expenditure are salary and allowances rupees 46,500, TA rupees 20,000, postage rupees 3,000, stationery and printing rupees 6,000, rent 3,500, contingency 6,000, provident fund etc. rupees 6,000, auditing rupees 1,000, examination expenses rupees 25,000, which then brings to a total of rupees 1,17,000. As against this expenditure, the fees are estimated as follows: fellowship and associates 1,08,000. Adding to that the fees already received 7,000, that makes a total of 1,15,000. New enrollment fees which are expected 15,000. Certificate of practice for associates 12,000. For fellows 40,800. Registration of articles 4,500. Examination fees 40,000. Recognition of institution fees 750. Sale of publications 350, and therefore a total of rupees 2,29,000. Now please note that the income of the subsequent years will not be as high as rupees 2,29,000 as the estimate of what this year. So therefore the income for the next year may be put at about rupees 1,60,000, and the total annual expenditure will come to about rupees 1,80,000. Gentlemen, the executive committee can be asked to go into the financial implications of the budget and report to the next council meeting. In the meantime, the estimates prepared by the government may be approved for the balance of the current financial year. Agreed. Let us now discuss the telegraphic address for the institute, installation of telephone, post box, and appointment of the solicitor or legal advisor. Now we may have the registered address as CICA, which stands for Council of Institute of Chartered Accountants. And if this address is not available, we can go for an alternative address. We will give one telephone to the office of the secretary with an extension to the president's room, and another telephone at the residence of the secretary. In addition, we will also get a post box for the council. Now, for the solicitor and or legal advisor, Mr. Srinivasan. Mr. President, the government will try to take the help of the Ministry of Law of the Government of India to find a solicitor, failing which we can look at alternate solutions. Agreed, thank you. Now, let us have the next meeting of the council in Delhi about the end of October next or in the first week of November, with the proviso that the various committees can also meet slightly before or immediately after the council meeting to economize on travelling expenditure. I request Mr. Srinivasan to please draw up the tentative rules and procedures regarding these committees, and we can then dispatch them for comment to the members of the committees, and then we can take a look at them in the council meeting and approve them. Moving on. Can I have suggestions on the date of the next examination? Sir, people in Madras find it very difficult to procure examination hall during the month of December, probably due to the music season. I don't know. Anyway, yeah, we have a music season in December. In any case, I request the exams be held in the month of November. Gentlemen, the months of January, February, March, and April are the worst months for the profession for it to devote its time to the examination. These are the busiest months. I think that while the examination committee is fixing up the dates for the examination, it should keep this in mind. Mr. President, will it be convenient to have the examination in the month of November and December? May? The examination committee in the future should fix a definite program. When a student starts an article, he is entitled to know about the program of his examinations. At the moment, there is no uniformity about publication of results. If and when the examiners find time, they examine the papers and the results are published at a much later date. There is great uncertainty about the publication of results. If the examinations are held at the end of November, the result should be out by the second Monday of January.
And if the examinations are held in May, the results should be out by the second Monday of July. Such a definite kind of program should be laid down. We will hold the examinations in November, but the dates will be left to the examination committee to fix. And the examination committee will also look at the advisability of fixing a definite program of dates of results and examinations as suggested by CMO. Let us now take up agenda item number 4. CA Vesh, please. Thank you. I propose a vote of thanks to the chair. Item 4, which should have been the first to draw the President's attention on his assuming the chair, has been altogether omitted. I do not know whether it's by accident or by design, but it's probably better to say that it's both by accident and by design. I congratulate the President very heartily on his election and compliment him in the manner in which he has conducted the proceedings during the last 2 days. The office which the President is now occupying is a great one. He is called upon by the entire Chartered Accountants fraternity of the nation to shoulder a huge responsibility. I assure the President of the utmost cooperation and willingness of the members of the Council. It is true that we have got what we wanted, but it is now for us to prove that we deserve what we got. I request every member of the Council to give his very best for the cause of this profession. As the Honourable Minister pointed out yesterday, the advancement of the country is dependent on the promotion of the industry and the economy, which in turn depends on the advancement of joint stock companies, and therein in that advancement runs our part of the business. We are not to be guided by petty considerations. We have to be guided by only one motto: what is best for the country? With this end in view, we should work for the future. I thank CA Vesh very much for the very kind remarks he's made. I have taken up the duty of President, knowing full well that I would get the cooperation of every single member of the Council. It will be my endeavour to work for the best interests of the profession and the Institute. The profession has certainly to prove that it deserves the autonomy. The function of the auditor is not merely to act as a tool in the hands of the person who has been responsible for his appointment, but he has to discharge his duties in a proper manner. The other aspect is the case is the relations between the Income Tax Department and our profession. As you well know, this is characterized by differences and antagonism. Now, I really cannot understand why this situation should exist at all. There should be the fullest cooperation between the department on one hand and the profession on the other. A position should be achieved where the department itself comes to the realization that they have to trust only the profession and no one else. When we are able to create that position, gentlemen, then we would have demonstrated to the government and to the entire country that we deserve the autonomy in the fullest measure. Another thing is that without the fullest and willing cooperation of all of you, I have little chance of delivering the onerous duties that have fallen upon my shoulders. I am delighted to find the best interests of the profession. Thank you.
Can we have a huge round of applause for all the actors, please? Let me quickly introduce each of the characters. So, can we request all the actors, Amitabh ji? Nothing is impossible if you feel it is possible. यही जिंदगी का मूल है और इसी के साथ में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में and most only happy 75th chartered accountant day to all of you. लेकिन आज की बात यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड शुरू होने वाली है क्योंकि आज हम आपको लेके आए हैं 3 ऐसे जो आपके साथ अपनी जर्नी का एक बिगेस्ट लेसन शेयर करेंगे